Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine for just a second that you are sitting right there in the chair of Bob Collingwood. Oh, that is not a comfortable chair to be in. No, it really isn't. I mean, the office around you is totally quiet. You can actually feel the polished mahogany of the desk, cool beneath your hands. Right. The door is firmly shut. But inside your mind, you are just navigating this impossibly chaotic, deafening storm. Because you are the president and CEO of the U.S. subsidiary of Woodland International. Exactly. And you aren't some novice, right? No. You are a brilliant executive. Oh, yeah. You've risen rapidly through the ranks of corporate America for one very simple reason. Which is that you actually know how to run a business. You understand the profit margins. You know exactly how to optimize a global supply chain down to the absolute fraction of a cent. Right. You know how to drive operational efficiency. But as you look at your calendar for the upcoming week, all of that hard-earned brilliance just feels entirely inadequate. Utterly inadequate. Because it's a schedule that looks way less like a traditional executive itinerary and honestly more like a political gauntlet. Yeah. It's basically a minefield where every single step threatens to just blow up the entire organization. So let's actually walk through Bob's week together, for you listening. Let's sit in his chair. Okay, let's do it. It's Monday morning. You are immediately facing a hostile state legislature hearing up in the Northeast. And they are debating a bill that would severely restrict your ability to relocate your manufacturing plants. Right. It's a direct, literal attack on your operational flexibility. Wow. But you survive that, right? But you don't get a break. Of course not. By Thursday, you have to pivot completely away from legal defense and suddenly oversee a critical multi-million-dollar marketing launch. Oh, for a brand new product line, right. Exactly. And your shareholders are just watching this launch like absolute hawks. So the pressure is just immense. It really is. And then come Saturday. Now, you aren't playing golf. No golf for Bob. No. You are standing at a podium, staring down a coalition of really fierce consumer advocates. And they are aggressively scrutinizing the safety of your products, armed with all this data. Data and a very hostile press corps. Wow. And Sunday. I mean, you'd think Sunday is a day of rest, right? Yeah, you would hope so. Nope. Instead, there is a massive environmental protest organized right outside the front gates of your primary manufacturing plant. Complete with the local news vans and bullhorns. Yeah, exactly. And the sheer terror of Bob's situation is that this is literally just the first 7 days. Just week one. Right. Because you look ahead to the following week, and Bob has to fly to Washington, D.C. to navigate this absolute labyrinth of brand new, highly complex regulatory compliance guidelines. Yep. And the second he lands back home, he has to sit across a bargaining table for these incredibly tense union negotiations. High-stakes stuff. Very. And before the ink is even dry on that contract, he has to sit down with local minority group leaders to coordinate a youth jobs program that the city is essentially demanding his company sponsor. So you look at this calendar, right? And you realize something very fundamental about Bob. He is trapped. Completely. He is caught in this relentless, exhausting cycle of crisis, reaction, and then more crisis. He possesses literally every single traditional skill required to manage a business. But what he completely lacks, what his MBA never, ever gave him, is the conceptual framework to actually manage turbulence. Yeah, he is fighting a highly sophisticated modern war with antique maps. That is a great way to put it. I mean, he's trying to solve late 20th and early 21st century complexities using a 19th century industrial mindset. Right. He sort of assumes the world is a machine he can just tune up. But the world has actually become an ecosystem that is reacting directly to him. And relying on that outdated map is just a recipe for absolute executive paralysis. It really is. Which honestly brings us to the very heart of our conversation today. Yeah. Because Bob's dilemma isn't just some hypothetical nightmare to stress you out. No, not at all. It is the foundational anecdote, the opening salvo, really, of a text that completely revolutionized how we understand the modern corporation. Today, we are exploring the seminal textbook, Strategic Management, a Stakeholder Approach by R. Edward Freeman. And we have designed this exploration specifically as a roadmap for you. Especially if you are someone new to academic research. Right, exactly. If you're standing at the threshold, just beginning your own journey into organizational theory. Trying to understand
how these massive human systems actually function. It is a remarkable piece of scholarship that you will honestly find yourself referencing repeatedly. It really is. I mean, it was first published back in 1984 as part of the Pittman series in Business and Public Policy. And at the time, its publication wasn't just, another business book hitting the shelves. Oh no, it proved to be an absolute landmark moment. It fundamentally shifted the tectonic plates of management theory. And Freeman, who is widely acknowledged today as a world leader in business ethics and strategic management. He provided this foundational work that continues to inspire scholars everywhere. His core thesis is elegant, but it's also incredibly radical. The idea that business can and must be understood as a system of how we create value for stakeholders. With that single premise, he connects capitalism with ethics once and for all. Ending the entire idea that the two are just mutually exclusive domains. Right. And before we can even begin to really unpack the mechanics of that theory, we need to understand the mind that actually built it. Absolutely. Professor R. Edward Freeman is widely recognized across the globe as the father of stakeholder theory. And stakeholder capitalism. Yes. He was born in Columbus, Georgia on December 18, 1951. And what I find so fascinating about his academic journey is just how deeply interdisciplinary it really is. Yeah, he didn't come up through standard corporate accounting or anything like that. No, he received a BA in mathematics and philosophy from Duke University in 1973. And then he went on to earn a PhD in philosophy from Washington University in St. Louis in 1978. That philosophical background is really the skeleton key to understanding all of his work. It is. He isn't just looking at spreadsheets or profit and loss statements. He's looking at the fundamental ontology of the firm. Okay, hold on. Let's just pause on ontology. Sure. Because that is a fantastic Philosophy 101 term. But for those of us who aren't, fresh out of a metaphysics seminar. Right. What does the ontology of the firm actually mean when you are sitting in a corporate boardroom? So it essentially means asking the most basic question possible. What is a corporation in its very essence? Is it just a legal fiction designed purely to generate cash for shareholders? Just a money-making machine? Right. Or is it a social organism? A web of human relationships that exists within a much larger societal fabric? That makes a lot of sense. Freeman's philosophical training basically allowed him to look past the math of business and actually see the human architecture. Wow. And he taught at the University of Minnesota in the Wharton School, didn't he? He did. And he is now the Eli Eisenstein Olson Professor of Business Administration at the Darden School of Business at the University of Virginia. And his impact has been recognized at the absolute highest levels. Definitely. In 2001, Professor Freeman was awarded the Pioneer Award for Lifetime Achievement by both the World Resources Institute and the Aspen Institute. And then a few years later, in 2005, the Virginia State Council on Higher Education honored him with the Outstanding Faculty Award. It's huge. It is. It is also really worth noting for you, as you diligently build your own research library, that on the 25th anniversary of this book's publication, Cambridge University Press actually offered a new print-on-demand edition. Yes, to introduce his work to an entirely new generation of readers. Now, we have actually placed the link to that Cambridge edition right in the show notes for you, so you can easily find it. Perfect. And, as you embark on this academic path, navigating these dense texts can definitely be daunting. Oh, it can be really overwhelming. But there is a wonderful lifeline we want to share with you. Yeah, an initiative designed specifically to support early career scholars. It's from the Academy of Management SIM Division. That's Social Issues in Management. They are starting a brand new monthly resource. Yes. Starting in June 2026, they are launching AOM SIM-Bytes. These are basically real-styled short videos featuring senior scholars and faculty members from the management community. And they are created specifically to break down these really complex ideas for early career scholars and PhD students. And it is honestly incredibly fitting that the very first YouTube short in this new series features Professor Ed Freeman himself. It really is. This initiative is being spearheaded by the SIM Curriculum Development Committee. And we are actually very proud to share that our producer, Mayukh Mukhopadhyay, who is a member of this committee, has been actively volunteering with the SIM committee leads for the past year. Yeah, he's been deeply involved in driving the planning, content design, and editing of the AOM SIM-Bytes initiative. It really is a fantastic resource. It's the brainchild of Professor Sheldine Simila at Trent University in Ontario. And is now being executed forward by the committee chair, Professor Jennifer Griffin at Loyola University in Chicago.
We have linked AOM SIM-Bytes in the show notes for you as well. Absolutely. Additionally, if you are planning to participate in person at the Academy of Management's 86th annual meeting in Philadelphia, USA, we highly recommend you register for the Professional Development Workshop, the PDW on the space economy. Yes, that is being spearheaded by Dr. Mehdi Montakabi of Said Business School at Oxford University. It is a highly entrepreneurial, multidisciplinary workshop that really pushes the boundaries of where management theory is heading next. And again, our producer, Mayukh Mukhopadhyay, is a contributor to this incredible session. The link for that registration is also waiting for you in the show notes. So whether or not you actually subscribe to this channel, we strongly urge you to make the time to read Freeman's thoughtfully crafted and seminal textbook. The link, as always, is in the show notes. All right, so if Bob Collingwood's traditional worldview is failing him so spectacularly, we have to ask a big question. Right. What was that old worldview, and why did it suddenly just stop working? Let's explore the massive conceptual shift that forced management to completely rethink everything. To truly appreciate the magnitude of what Freeman did here, we kind of have to look backward first. We have to map the historical progression of business model. Exactly. Like, how did we get to a place where a brilliant CEO is literally paralyzed by his own calendar? Historically, the concept of a business began with what we call the production view of the firm. This is the absolute bare bones basics of commerce. Exactly. Picture a straight, very simple horizontal line. Okay. On the left side, you have your suppliers. Right. In the middle, you have the firm. And on the right side, you have your customers. That was basically the entire known universe of the business. Yes. You bought raw materials, you applied labor to convert them into a product, and you sold them. In this era, the owner-entrepreneur was usually the manager, right? Yep. And the workers were often just family members or apprentices from the local village. It was a very closed, easily comprehensible loop. If you made a good product and priced it right, you succeeded. Boom. But then the world industrialized. The scale of human ambition just exploded. We built massive assembly lines, sprawling factories, and, transcontinental railroads. Organizations became so massive that they required immense capital. Way more money than any single family could ever hope to provide. Which necessitates the second phase of our history, the managerial view of the firm. Because you need so much capital, you suddenly see the classic separation of ownership and control. Right. The simple straight line morphs into this hub and spoke model. The firm sits right in the center, and the professional managers, the early versions of our guy Bob Collingwood, must now balance four primary distinct groups. Suppliers, customers, owners. Meaning distant shareholders who provide capital but, never set foot on the factory floor. And employees, who are no longer family members but non-family wage earners. Who are also increasingly beginning to organize into labor unions to protect their interests. Right. Think of it like a manager in the 1950s buying a brand new, top-of-the-line steel filing cabinet for his office. Okay, I like this visual. This cabinet represents the managerial view. It has four perfectly neat, clearly labeled drawers. Suppliers, customers, owners, and employees. Exactly. And for a very long time, this system is an absolute dream. Because every single piece of paper, every strategic decision, every memo that crosses the manager's desk fits perfectly into one of those four drawers. You get an invoice, supplier drawer, a dividend request, owner drawer, a union grievance, employee drawer. It provides a really profound sense of psychological safety for the manager. It allows for a high degree of control, predictability, and standard operating procedures. Right, but the real world doesn't stay neat forever. No, it doesn't. Time passes. The post-war boom shifts into the social upheavals of the 1960s. The regulatory expansions of the 70s, the globalized competition of the 80s. Suddenly, our manager gets a highly complex document detailing a brand new, stringent clean air regulation from the federal government. And where does it go? It doesn't quite fit into any of the four drawers. So he just tosses it into a flimsy manila folder sitting right on top of the cabinet labeled miscellaneous. Then comes a scathing letter from a coalition of consumer advocacy groups, demanding a total redesign of a product for safety reasons. Into the miscellaneous folder it goes.
Then a foreign competitor, operating under completely different government-subsidized labor laws, enters the domestic market and undercuts prices by 40%. Into the miscellaneous folder. Over time, that miscellaneous folder gets so massively overstuffed, so heavy with complex environmental pressures, that the entire filing system fundamentally breaks down. You don't just need a few more folders at that point. No, the whole cabinet is obsolete. You need a completely new conceptual filing system. I would actually argue it's even worse than just an overstuffed cabinet. How so? The papers in that miscellaneous folder are actively catching fire. Wow. Okay. They represent existential threats. And your analogy perfectly illustrates the critical difference between what Freeman categorizes as internal change versus external change. All right, break that down for me. How does he separate those two? So internal change is what happens inside those four neat drawers. Okay. An owner demands a higher quarterly dividend. A union goes on strike to demand a different work culture and better health care. Or a critical supplier suddenly raises the price of raw steel. Exactly. Managers are completely used to this. They have established rules, algorithms, and historical precedents for dealing with internal change. It might be stressful, but it occurs within a familiar, understood framework. Right. It is a known quantity. But the burning miscellaneous folder on top of the cabinet, that is external change. Yes. External change emerges from the murky, undefined environment that surrounds the firm. It brings forth entirely new entities that the managerial view just never accounted for. Vocal consumer advocates, aggressive foreign competition, complex government regulations. Highly organized special interest groups, and a relentless 24-hour investigative media. External change doesn't just ask for a different outcome within the old rules of the game. It demands that the rules of the game be changed entirely. It challenges the very validity and legitimacy of the managerial view itself. Now, real quick, as we discuss these external forces, government regulators, environmentalists, consumer advocates, and special interest groups from across both the left-wing and right-wing political spectrums, we need to make something explicitly, unequivocally clear to you, the listener. Yes. We are strictly and impartially reporting the analytical frameworks provided by Professor Freeman's text. We are not taking a side on the validity, the morality, or the political claims of any of these specific groups. Our discussion is an impartial, objective analysis of how the mere existence of these external pressures forces a corporate organization to adapt its strategic framework to survive. Right, we are looking at the mechanics of organizational turbulence. We are not endorsing the viewpoints of the original source material or the specific political agendas of the groups mentioned within it. Just want to be super clear on that. Absolutely. So from a purely mechanical standpoint, Freeman argues that if an executive tries to process these massive, fiery external changes through the old, obsolete managerial view, they experience what Bob Collingwood is experiencing: total system overload. And when humans experience system overload, they often resort to a psychological defense mechanism. One that Freeman cheekily calls the blame the stakeholder game. Ah, I love that. How does that game play out in a boardroom? Well, when the old filing cabinet fails to contain the chaos, instead of the manager realizing the cabinet itself is obsolete, they blame the paper that won't fit. Exactly. You pick a group, usually the government, or the media, or special interest groups. And you just project all of the firm's strategic shortcomings onto their supposedly unreasonable or irrational demands. The executive literally denies that these groups have any legitimate impact or right to influence the business. They sit in the boardroom and complain that if only the regulators would go away, everything would be fine. But denial and projection do not solve the structural problem. As the old comic strip Pogo famously declared, "We have met the enemy and he is us." Right. The failure is not the stakeholders' existence in the world. The failure is management's lack of a rigorous framework to map, understand, and actually integrate them into their strategy. Which means the only way out of Bob Collingwood's nightmare is to build the new filing system. The stakeholder view. This framework radically redraws the boundaries of the firm. It states that the firm must encompass all groups that can affect or be affected by the accomplishment of the organization's purpose. But if you are a researcher trying to map this transition, you can't just accept the new model on faith. No, you have to understand the archaeology of the idea. Where did these new folders originally come from? To answer that, we have to rewind the tape. We have to trace the genealogy of the word itself. The term stakeholder didn't just, fall from the sky into a modern business textbook. It first appeared in the management literature in a very specific context. An internal memorandum
at the Stanford Research Institute, which we now know as SRI International, in 1963. 1963. Let's really set the stage for that. We are right in the thick of the Cold War. The post-war industrial boom is at its absolute peak. The space race is accelerating. And this social fabric of the globe is just beginning to visibly shift. It was a time of immense technological and social optimism, but also this rapidly growing complexity. And the SRI memo defines stakeholders with a beautiful, stark clarity. They define them as those groups without whose support the organization would cease to exist. They were intentionally playing on the word stockholder. Ah, I see. They were trying to generalize the notion to show that while stockholders are critical, management had to be responsive to a much wider array of survival-critical groups just to keep the enterprise alive. From that single foundational 1963 SRI memo, Freeman actually identifies 4 distinct academic trails that the stakeholder concept traveled down over the next 2 decades. And if you are a PhD student trying to piece together a literature review, mapping these 4 trails is absolutely vital. You really need to know how the theory evolved across different disciplines. So let's walk through them. Where does Trail 1 take us? Trail 1 winds through the corporate planning literature. Okay. This is where we find legendary thinkers like Igor Ansoff. Interestingly, in his 1965 book, Corporate Strategy, Ansoff actually rejected the stakeholder theory. Wait, really? One of the pioneers of corporate strategy completely rejected it. He did. Why? Because Ansoff believed strictly in economic optimization. Right. He looked at the stakeholder model and just saw a mess of conflicting claims. He argued that you shouldn't try to balance the conflicting demands of various stakeholders as primary equal objectives of the firm. Because doing so would dilute focus, I assume. Exactly. Rather, he argued that economic goals like profitability, market share were the primary objectives. And any social responsibilities to other stakeholders were just secondary constraints. Correct. You only dealt with them to the extent that they actually hindered your economic goals. But as we moved into the 1970s, and business environments became radically less stable due to oil shocks and inflation, corporate planners realized Ansoff's rigid model wasn't enough anymore. They began quietly adopting stakeholder concepts to gather intelligence, forecast environmental shifts, and try to predict the best reply a firm could make to a super volatile world. So Trail 1 was all about using the concept as a sort of radar system to plan for a turbulent future. Exactly. What about the second trail? Trail 2 is systems theory. Okay. Pioneered by incredible thinkers like Russell Ackoff and C. West Churchman. Yes. They look at the world through an open systems lens. Instead of looking at a corporate organization in isolation as like a closed box, they viewed the organization as an organ within a much larger societal body. Ackoff argued that you couldn't solve a complex problem like low corporate earnings just by looking inward at your own efficiency. No, you had to design the whole system with the active participation and interaction of all the stakeholders. It's almost like an ecological approach to business. Exactly. You can't save the fish without looking at the water, the algae, and the predators, right? It was a highly collaborative, holistic approach. Which naturally leads us to Trail 3, corporate social responsibility, or CFR. Oh, yes. The explosive social movements of the 1960s and 70s. The civil rights movement, the birth of modern environmentalism. The rise of consumer protectionism championed by figures like Ralph Nader. All of it forced a fundamental rethinking of business as a social institution. Researchers began applying the stakeholder concept to non-traditional, often highly adversarial groups. The focus shifted away from simply satisfying owners to responding proactively to community and societal needs. This is the era where we see institutions like the Harvard Business School deeply developing the corporate social responsiveness model. Exactly. I want to pause here, though. Okay. I want to really push back on this because I think it's a question any rigorous researcher simply must ask. Let's hear it. If we follow this CSR trail to its logical conclusion, aren't we asking for trouble? So Doesn't lumping social responsibility and business strategy into the exact same bucket risk diluting the hard, unforgiving economic realities of running a profitable firm? Like, if a CEO is spending half their time acting like a social worker or a community organizer, aren't they committing a dereliction of their fiduciary duty to the shareholders who entrusted them with their capital? You are hitting on the single most common and perhaps the most vital critique of stakeholder theory right there.
It is the classic Milton Friedman argument, right? The social responsibility of business is to increase its profits. Right. But Freeman's counter-argument is really profound. He argues that the very split between economic and social is conceptually arbitrary. Conceptually arbitrary? Yes. It is a false binary created by academics, not an actual reflection of reality. Explain that to me. How is the split arbitrary? Because actions aimed at one side inevitably, unavoidably affect the other. Okay. Let's look at a practical example. Say you manage a factory. All right, I'm the factory manager. You make a purely economic decision to cut your waste disposal costs by secretly dumping chemical runoff into the local river. Yikes. Your spreadsheets look fantastic for 1 quarter. Profits are up. But the social backlash from local environmental groups, the subsequent investigative media reports, and the resulting political fines from regulators will instantly destroy those economic gains. Exactly. They will tank your stock price and potentially put you in prison. So the purely economic action triggered a social reaction that destroyed the economic foundation anyway. Precisely. And conversely, if you make a purely social decision to vastly overpay your suppliers simply because you want to be a generous community partner, you will bleed cash and go bankrupt economically. Which means you can no longer help anyone. The economic and the social are inextricably woven together in the complex fabric of human interaction. A rational business agent doesn't just maximize dollars in a vacuum. They must maximize a complex set of preferences across multiple groups. Freeman says we have to stop treating social issues as a charitable add-on to business as usual. Managing stakeholder relationships is the business. Yes. That makes complete sense when you view it as a total ecosystem. And that actually brings us to the fourth and final intellectual trail, organization theory. Correct. In the 1960s, sociologists and organization theorists realized that looking only inside an organization to understand its behavior didn't explain enough of the variance they were seeing in the real world. William Evan developed the concept of the organization set, looking at the complex network of organizations in an environment and how they influence each other. And Eric Renman, working over in Sweden, explicitly used the word stakeholders to theorize about industrial democracy. He defined them as groups dependent on the company and, crucially, on whom the company depends. Right. And James Thompson talked about the task environment and groups that make a difference to goal setting. So if you are that young PhD student we mentioned, understanding this rich 4-part intellectual history is absolutely fantastic for writing a comprehensive literature review. You can clearly see how planning, systems thinking, social responsibility, and organizational sociology all converged into this one idea. But as we transition from academic theory to executive practice, the real question remains. How does a manager like Bob Collingwood actually apply this theory in the real world? How do you operationalize a philosophy? Yes, the crucial pivot. And it is exactly what Freeman addresses as he outlines the 3 levels of stakeholder management. He argues that to possess high stakeholder management capability, the ability to actually survive and thrive in turbulence, an organization must master and interconnect 3 distinct levels of analysis. The rational, the process, and the transactional. Let's unpack the rational level first. If I'm understanding this correctly, this is essentially about mapping the territory. It's the diagnostic phase, yes. Okay. At the rational level, you must figure out who the stakeholders actually are and what their perceived stakes are. And you cannot be vague about this, right? Absolutely not. Right. You have to move from the generic, like just saying the government or consumer advocates or the community, to the highly specific. You must list the exact regulatory agencies, the specific advocacy groups with names and leaders, the specific local union chapters. And then you must map their actual stakes. What do they care about? Is their stake purely economic? Is it technological? Is it deeply political or ideological? And this is where Freeman introduces a concept that I think is just brilliant. The stakeholder role set. Yes. Can you explain the nuance of that for the listener? We often make this cognitive error of treating a stakeholder as a single-dimensional monolithic entity. We just put them in a convenient box. Right. But think about a single human being interacting with a corporation. You might have an employee working on your manufacturing assembly line, but that same employee might also own shares in the company through their 401k retirement plan. Making them simultaneously an owner. Exactly.
They likely buy your consumer products, making them a customer. And on the weekends, they might be an active vocal member of a local environmental group that is actually protesting your plant's carbon emissions. They hold multiple, sometimes conflicting roles simultaneously. Wow. That web of identities is their stakeholder role set. And they have to internally balance those conflicting expectations within themselves. They want job security, but they also want high dividends, low prices, and clean air. If management treats that individual strictly and only as an employee, they are completely missing 3/4 of the dynamic reality of that person's relationship with the firm. So that is the rational level mapping, the complex multidimensional identities and specific stakes. Once you have that map, what happens at the process level? The process level is basically about the plumbing of the organization. The standard operating procedures, the SOPs. Right. How does the organization routinely, systematically gather information about these stakeholders and integrate it into their daily decision-making? Freeman strongly critiques traditional strategic review processes and classic portfolio analysis here. Think of the famous Boston Consulting Group growth share matrix. Right. Categorizing business units as stars, cash cows, question marks, and dogs. A staple of literally every MBA program in the world. And completely inadequate for stakeholder management. Why is that? Because portfolio analysis looks only at market share and industry growth. It is entirely internally and market-focused. It completely ignores the non-marketplace stakeholders. Yes, it ignores the ability of a suddenly aggressive regulator, a hostile local government, or a viral media campaign to destroy a highly profitable star business unit overnight. Furthermore, the internal processes of most companies actively discourage stakeholder management. A division manager is typically rewarded, bonused, and promoted based on quarterly profit targets. Right. If that manager spends time and political capital negotiating with a frustrated community group to prevent a future crisis, they incur costs today for a benefit tomorrow. And they're penalized on their performance review for missing their quarterly numbers. The internal processes themselves are literally designed to punish stakeholder management. The system is rigged to force managers to keep trying to stuff papers into the old broken filing cabinet. Which brings us to the third and most critical level, the transactional level. This is where the rubber meets the road. It is the actual day-to-day, face-to-face interactions, phone calls, and negotiations between the firm's managers and the stakeholders themselves. And this is where Freeman dives into the fascinating philosophy of voluntarism versus the prisoner's dilemma, which he brilliantly reframes as the stakeholder dilemma. I want you to really walk us through this because it perfectly illustrates why things go so catastrophically wrong at the transactional level when executives panic. Okay, let's look at the classic game theory scenario of the prisoner's dilemma. Two criminal suspects are arrested and interrogated in separate soundproof cells. They absolutely cannot communicate with each other. The prosecutor offers them a deal. If they both stay silent, cooperating with each other, they get a light sentence. If one confesses and betrays the other, the confessor goes free and the silent one gets a maximum harsh sentence. If both confess, betraying each other, Yeah. both get a medium harsh sentence. Because they cannot communicate, and because they are terrified, the other will betray them to save themselves. Rational self-interest dictates that they both confess. They both try to optimize for themselves, and as a result, they both suffer a suboptimal, destructive outcome. Freeman argues that corporations and stakeholders routinely play this exact same destructive game. They play hardball. The corporation refuses to listen to the community. The community feels ignored, so they run to the media or file a massive class action lawsuit. The corporation responds with aggressive litigation and PR spin. Suddenly, both sides are locked in a costly, bitter, destructive war. Millions are spent on legal fees, reputations are completely ruined, and nobody gets what they actually want. They both lose. But here's the thing I keep getting stuck on. Yeah. Unlike those two prisoners locked in separate concrete cells, corporations and stakeholders can communicate. They have telephones, they have email, they have boardrooms and town halls. Why do brilliant executives, people with Ivy League degrees and decades of operational experience, act as if they are in solitary confinement when dealing with the public? It is a phenomenal observation, and it cuts right to the psychological core of the issue. Okay. They act as if they're in solitary confinement because they operate without a philosophy of voluntarism. Voluntarism. Right. And voluntarism is not about, like,
Volunteering at a soup kitchen. In this context, what is it? It is the active, intentional, strategic pursuit of voluntary win-win agreements. It is the conscious executive decision to sit down at the table, look the stakeholder in the eye, and communicate before a crisis forces you into a courtroom. When executives lack voluntarism, they just wait. They wait for regulatory mandates, court orders, or boycotts to force their hand. They view the stakeholder purely as an adversary to be defeated, managed, or ignored, rather than a legitimate partner to negotiate with. Freeman argues that high stakeholder management capability requires an organization to explicitly negotiate, to proactively overspend resources on understanding stakeholder needs, and to forge voluntary agreements that create mutual value. Let's make that concrete for a second. How does voluntarism actually work step by step? Let's take the factory pollution example from earlier. Sure. If a CEO lacks voluntarism, they hide the pollution data until a whistleblower leaks it. Then they deny it, then they get sued, and then they pay a massive fine and suffer a huge reputational hit. But a CEO practicing voluntarism sees the rising environmental concern in the community because they've mapped the rational level. Right. So before a lawsuit is ever even drafted, the CEO calls a town hall meeting with the local environmental activists. They just open the books. They say, here is our emission data. Here is the cost of implementing the green tech you want. It would bankrupt us tomorrow. But we want to fix this. The CEO then co-creates a realistic 5-year transition timeline with the activists. The community gets cleaner air over time. The company avoids a crippling lawsuit and PR disaster, and they build actual trust. That is a voluntary agreement. It is proactive vulnerability for strategic gain. But to communicate effectively across that table, to offer voluntary agreements that actually align with the company's long-term survival, the organization must first know its own soul. It has to know what it is actually trying to achieve in the world beyond just surviving the quarter. And that beautifully transitions us into the next phase of Freeman's framework. Yeah. Setting strategic direction and enterprise strategy. Before a company can decide how to negotiate with an activist or a regulator, it must answer the most foundational existential question of all. What do we stand for? This is the absolute core of enterprise strategy. It is important to distinguish this from corporate strategy, by the way. Right. Corporate strategy asks, what business are we in? Are we in the railroad business or the transportation business? Enterprise strategy goes much deeper. It asks, what is our actual role in society? If a researcher is trying to determine what a company truly stands for, beyond the marketing fluff, how do they do it? Freeman outlines 3 necessary analyses that must be synthesized. Okay, what's the first? First is the stakeholder analysis, which we just discussed, mapping who they are and what their specific stakes are. Sure. Second is values analysis. This is deeply introspective. You have to look at the intrinsic values of the key executives and the historic culture of the organization. Intrinsic values are the things they believe are good in and of themselves, regardless of outcome. Yes. Right. And you must separate those from instrumental values, which are just the day-to-day methods, behaviors, and tactics used to achieve those intrinsic values. Exactly. And third is societal issues analysis. This requires really lifting your head up from the daily grind and projecting out 5 to 10 years. To understand the macro social, political, economic, and technological issues facing society at large, you then map how the firm's specific values and stakeholders intersect with those looming realities. When an organization rigorously synthesizes those 3 analyses, Freeman says they will typically align their corporate identity with one of 5 generic enterprise strategies. I want to debate these down because for anyone analyzing a firm, categorizing them correctly is half the battle. The first is the specific stakeholder strategy. This is where a firm decides that its ultimate purpose is to maximize benefits to one key overriding group. Most commonly, this is the customer. You see this in companies that become legendary for fanatical customer service. Every single operational decision, every HR policy, every R&D investment is ruthlessly routed through a single question. How does this maximize value for the end user? If a policy hurts employees slightly but drastically improves the customer experience, they just do it. Okay, that one is fairly common. The second is the stockholder strategy. This is the classic Freeman-esque approach, right? Maximize financial returns for the owners above all else. Exactly. In this strategy, the firm believes its only true moral and legal obligation is to the providers of capital. All other stakeholders, employees, communities, suppliers, are managed purely instrumentally.
You treat employees well only to the exact extent that it prevents turnover costs that would hurt profits. You don't do it because it's intrinsically good. You do it because it protects the dividend. The third gets much more philosophical. The utilitarian strategy. Utilitarianism, drawing from philosophers like Jeremy Bentham and John Stuart Mill, is about achieving the greatest good for the greatest number. A firm adopting this strategy tries to maximize the average welfare level of all its stakeholders simultaneously. They are constantly balancing the scales, running complex calculations to ensure that the aggregate benefit they provide to society outweighs the costs they extract. Now, the fourth one is where I struggle a bit. The Rawlsian strategy, named after the political philosopher John Rawls. Rawls is famous for his concept of justice as fairness and the veil of ignorance. In a corporate context, a Rawlsian enterprise strategy means acting intentionally to raise the level of the worst-off stakeholder. It focuses heavily on equality of opportunity and addressing systemic imbalances. If a firm maps its stakeholders and sees that a specific subset of its labor force in a developing nation or a local community near one of its mines is severely disadvantaged and suffering, the enterprise strategy dictates focusing disproportionate resources on lifting that specific group up to a baseline of equity. This is where I have to push back. Okay. I understand the philosophy, but in a cutthroat, hyper-competitive global market, isn't a Rawlsian strategy essentially corporate suicide? How do you mean? If you are purposefully diverting vast resources away from R&D or shareholder returns just to elevate your least productive or most vulnerable stakeholder, how do you survive against a competitor running a ruthless stockholder strategy? It is a fierce debate. The defense of the Rawlsian strategy in a corporate setting is based on systemic risk and long-term stability. Okay, systemic risk. If you ignore your worst-off stakeholder, their misery eventually becomes a massive competitive threat. If that marginalized labor force revolts, strikes, or brings international human rights investigations to your doorstep, your entire supply chain collapses. Exactly. The competitor running the ruthless stockholder strategy might win the quarter, but they are building their castle on a powder keg. The Rawlsian firm sacrifices short-term optimization to ensure the foundation of the ecosystem is secure enough to survive long-term turbulence. That reframes it from charity to ultimate risk management. It does. And finally, the fifth generic strategy is the social harmony strategy. This strategy is deeply communitarian. It is about ensuring near unanimous consensus among the stakeholder network. The firm running this strategy simply won't make a major strategic move, like opening a new plant or launching a disruptive product, unless it has the broad support and agreement of its key stakeholders. They value the long-term relationship and the harmony of the community over short-term unilateral gains. To illustrate how dangerous it is when a company doesn't understand its own strategy, Freeman introduces the concept of the stakeholder audit. Let's look at the fascinating case of CD Insurance Co. CD Insurance was a regional health insurance firm. Historically, they operated with a very strong utilitarian strategy. They cared deeply about community welfare, keeping premiums manageable, and serving their local policyholders. It was baked into their culture. But a new CEO came in. He looked at the rapidly changing, turbulent healthcare industry, panicked, and decided they needed to massively spread their financial risk. He subtly but forcefully shifted the enterprise strategy toward a stockholder strategy. He pushed for rapid geographical expansion, aggressive new financial ventures, and ruthless cost-cutting to maximize immediate returns. And what did the stakeholder audit reveal? It revealed massive, systemic internal conflict. The new instrumental actions dictated by the CEO completely clashed with the deep intrinsic values of the long-term employees and middle managers. The staff still believed they were there to serve the local community, but they were being forced to execute a cutthroat expansion plan. Morale plummeted, efficiency collapsed, and the company nearly tore itself apart because the rational identity did not match the transactional reality. And then there's the macro-level failure of Major Oil Inc., a classic case of completely failing to run a proper societal issues analysis. Major Oil is a perfect historical lesson. For decades, the massive Western oil companies operated in an incredibly stable environment. They practically ignored the supplier side of their stakeholder map because they completely dominated the sovereign nations where they extracted the oil. They dictated terms. When the Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, was formed in 1960, the major oil executives practically laughed it off. They thought it was a political joke. They failed to audit the shifting geopolitical power dynamics.
They didn't adjust their enterprise strategy to account for a massive, highly coordinated, new political and economic stakeholder. And then 1973 happens. Yes, the 1973 oil crisis. Suddenly, that joke controlled the global oil supply, embargoed exports, and quadrupled prices. The environment became radically turbulent overnight. Major oil suffered immensely because they hadn't bothered to ask, what do we stand for and how do we negotiate in relation to highly organized, sovereign-producing nations? They assumed their map from 1950 would work forever. But let me raise another issue here. What about the danger of self-deception? Self-deception. What happens when a young researcher is analyzing a company and they look at the glossy PR brochures, the beautiful website, the CEO's keynote speeches? And it all preaches a beautiful social harmony or utilitarian strategy. But when you dig into the SEC filings, when you look at their actual R&D budget, their lobbying expenditures, and their executive compensation structure, it reflects a pure, ruthless stockholder strategy. Exactly. That is precisely why the stakeholder audit is so vital. It is the ultimate truth teller. It slices through all the PR fluff. The audit is a rigorous process that states the claimed corporate mission, identifies the actual stakeholder issues impacting the firm, assesses the current strategies being deployed on the ground, and then forces management to confront the gaps. The budget is where the truth lives. If a CEO claims a Rawlsian strategy of lifting up local communities, but the audit reveals that 100% of executive bonuses are tied strictly to quarterly earnings per share. The audit exposes that the transactional level is making a mockery of the rational level. If you aren't actively allocating financial and temporal resources to a stakeholder, they aren't part of your strategy. You are just writing fiction. So once the organization has ripped off the Band-Aid, looked at the brutal reality of the audit, aligned its intrinsic values, and truly knows what it stands for, how does it actually execute? This brings us to Section 5, Chapters 5 and 6 of Freeman's work, formulating and implementing programs. We are moving from grand philosophical alignment to tactical strategic programming. To formulate a concrete program for dealing with a specific stakeholder, you have to stop guessing and start analyzing their behavior using two crucial defining metrics. Cooperative potential, or CP, and competitive threat, or CT. Break those down for me. Cooperative potential asks a positive question. How much could this specific group help us achieve our organizational objectives if we aligned with them? And competitive threat asks the negative inverse. How much damage could this group do, or how effectively could they prevent us from achieving our objectives if they opposed us? And when you map high and low CP against high and low CT on a matrix, you get 4 resulting generic behavioral strategies. Exactly. First, if a group has high cooperative potential and low competitive threat, meaning they can help you immensely, but they really can't hurt you much if they walk away. You use an offensive strategy. You don't wait for them. You proactively reach out, invest resources, and try to bring about that cooperative potential to accelerate your goals. Second, if they have low cooperative potential and high competitive threat, they have no desire or ability to help you, but they have the power to absolutely destroy you. You use a defensive strategy. You build moats, you fortify your legal positions, and your primary goal is simply to prevent their threat from materializing. Third, and this is the most volatile quadrant, if they have high CP, and high CT meaning they could be your greatest, most powerful ally, or your absolute worst, most destructive enemy. You use a swing strategy, or what Freeman calls changing the rules. You cannot maintain the status quo. You have to fundamentally alter the nature of your interaction to secure their massive potential help while simultaneously neutralizing their massive threat. And fourth, if they have low CP and low CT, they can't help and they can't hurt. You use a hold strategy. You simply monitor them, maintain your current posture, but you don't expend massive new resources trying to woo them. To really see how catastrophic it is when executives miscalculate these metrics, we have to explore an incredible historical narrative from the book. The story of the U.S. supersonic transport, or the SST, in the 1960s. This is a phenomenal story of hubris. Set the scene for us. It is the height of the 1960s Cold War. National prestige is everything. The Europeans are partnering to build the Concorde, a supersonic commercial airliner. The Soviets are building their own version, the 2144. The United States government, terrified of losing aerospace dominance, partners with private industry, primarily massive contractors like Boeing and Lockheed, to build an American SST. The goal was an aircraft that could fly Mach 3,
dwarfing the Concorde. It was a massive, multi-billion-dollar project. In 1964, President Lyndon B. Johnson created a Presidential Advisory Committee, the PSIS, to review the project's viability. And he appointed his Secretary of Defense, Robert McNamara, to chair it. How does the CP and CT framework apply to this massive engineering project? Initially, the aerospace executives and the project champions viewed McNamara and the PP purely as a hold stakeholder. They mapped them as low CP, low CT. Why would they think the Secretary of Defense had low threat potential over a government project? Because of the political climate. They assumed the PPA would simply rubber stamp the project. They thought the emotional appeal of national pride, beating the Soviets, and maintaining American aerospace supremacy would override any bureaucratic concerns. They thought the PPA was just a formality, but they fundamentally misunderstood who Robert McNamara was. McNamara brought his rigorous, ruthless, highly quantitative, cost-benefit analysis approach from the Ford Motor Company and the Department of Defense into the PP. He wasn't swayed by patriotism. He wanted to see the math. He started asking incredibly hard, uncomfortable questions about the true economic viability of the plane. The severe problem of sonic booms over populated areas and the potential environmental impact on the ozone layer. Overnight, the PPA shifted from a low CP and low CT hold stakeholder to a low CP and high CT defensive threat. They held the power to delay or entirely kill the federal funding. So, as McNamara shifts into this massive threat, what should Boeing and Lockheed have done if they had a high stakeholder management capability? If they had continuously mapped the political environment and recognized McNamara's behavioral shift early, they could have adapted. They could have adopted a change the rules or a defensive strategy immediately. Instead of continually relying on emotional, patriotic arguments about beating the French and the Soviets, which McNamara didn't care about, they could have anticipated his analytical demands. They could have proactively provided the rigorous economic forecasts and environmental mitigation data he required. They could have formed strategic coalitions with other powerful stakeholders in Congress or the airlines to alter his perception of the risk. But because they suffered from executive arrogance, because they failed to accurately assess his behavioral metrics and adapt their strategy, the project suffered agonizing delays, massive cost overruns, and was eventually canceled entirely by Congress in 1971. A triumph of engineering killed by a failure of stakeholder mapping. That perfectly highlights the implementation pitfalls Freeman warns about. I want to discuss the real-world traps that snare researchers and executives alike when they try to use these tools. The first one is a classic: analysis paralysis. Yes. A researcher or a well-meaning manager can get so enamored with the theory, so obsessed with drawing endless, incredibly complex, multicolored stakeholder maps, debating whether a group is a 0.6 or a 0.7 on the competitive threat scale, that they never actually leave the office to talk to anyone. The transactional level freezes completely, while the rational level creates beautiful, utterly useless charts. The map becomes more important than the territory. And the other trap, which is perhaps my favorite concept in the whole book, is the snail darter fallacy. The snail darter fallacy is a profound warning about hidden power. It is named after a tiny, seemingly insignificant 3-inch fish called the snail darter. In the 1970s, the Tennessee Valley Authority was building the massive, multi-million-dollar Tellico Dam. They had mapped their stakeholders. They had dealt with local governments, labor unions, and massive engineering firms. But they ignored a small group of local conservationists and a tiny fish. They mapped the fish and the conservationists as low CP, low CT, a hold strategy, insignificant. Precisely. But what the TVA didn't realize was that the conservationists had a hidden lever, the newly passed Endangered Species Act. It's by getting the snail darter listed as endangered, that tiny, seemingly powerless group suddenly possessed the ultimate legal competitive threat. They used that lever to temporarily halt a nearly completed massive federal infrastructure project, taking it all the way to the Supreme Court. The fallacy is ignoring a microscopic stakeholder because they appear powerless, without doing the deep work to realize they have found a hidden, legal, political, or social lever that suddenly gives them the power to destroy your strategy. Reflecting on this as a tool for a young researcher, it is conceptually profound. When you take this framework and use it to study past corporate bankruptcies or project failures, you stop viewing them merely as financial miscalculations, bad market timing, or engineering flaws. You start viewing them as failures in empathy. A failure to perform rigorous behavioral mapping.
A failure of the executives at Boeing to put themselves in the analytical shoes of Robert McNamara or the executives at the TVA to understand the legal creativity of a local conservationist. It is exactly that. It is a failure of institutional imagination. And if adopting this stakeholder framework fundamentally changes how a company strategizes, how it views empathy and imagination as core competencies, then it must inevitably, structurally change the actual job descriptions of the people running the company. This leads us to the final implications of Freeman's work, the impact on the board, the functions, and the executive. Let's start at the very top of the corporate pyramid, the board of directors. Under the old, comfortable managerial view, the board was there for one very simple, legally defined reason: to represent the financial interests of the shareholders, monitor the stock price, and fire the CEO if the dividends dropped. But under stakeholder theory, the role of the board undergoes a radical, complex transformation. The board must move far beyond exclusive shareholder representation. It becomes the ultimate focal point for managing conflicts between diverse, highly powerful proxy groups. We see this happening in real time today. You have activist investors demanding board seats specifically for environmental oversight. You have European models where labor union representatives are legally mandated to sit on corporate boards. The board's new job is to ensure that the enterprise strategy, what the firm fundamentally stands for, is actually being executed and balanced equitably across the entire stakeholder map, not just optimized for the owner's drawer. And this structural shift cascades down into every functional discipline of management. Take public relations, for example. Under the old model, PR was essentially a corporate fire department. They were a reactive crisis management team, or a group that wrote cheerful press releases about minor charity donations. Under the stakeholder model, PR has to evolve dramatically into external affairs. They become the corporate radar system. They are the boundary spanners whose primary job is to scan the murky environment, identify new snail darters before they find their legal levers, and actively manage complex multi-issue negotiations before they ever become crises. And marketing. How does selling a product change? Marketing can no longer just be about convincing a customer to buy a widget. Marketing must market the very legitimacy of the company's existence to all stakeholders. They have to use their sophisticated segmentation, data analysis, and communication tools not just to move inventory, but to deeply understand the diverse psychological and social needs of local communities, wary regulators, and skeptical activist groups. And this fundamentally redefines the role of the internal managers as well. Freeman introduces the idea of managers acting as conduits for external stakeholders. That is a heavy burden. It is a massive shift in responsibility. Think of a local plant manager. Historically, their only job was manufacturing efficiency. Turn raw materials into product at the lowest possible cost. But under this framework, that manager is the primary conduit through which the local community interacts with the global corporation. If the community has severe concerns about nighttime noise pollution, heavy truck traffic, or chemical smells, the plant manager isn't just an employee defending the company. They become the stakeholders' representative internally. They have to take the community's concerns up the corporate ladder and fight for them, because if they don't, the community will revolt and the plant will be shut down. Which finally brings us to the ultimate role, the executive. The Bob Collingwoods of the world, the CEO. Under this framework, the CEO is no longer just a brilliant financial mechanic, an allocator of capital resources tuning an engine. No, the CEO becomes a balancer of interests. They become a highly sophisticated public and private leader whose primary job is to manage the firm through continuous, unavoidable external turbulence. I think the best way to visualize this transformation is to think about architecture. The old managerial CEO was like a traditional masonry builder, constructing a rigid, massive brick tower. It is strong, it is solid, and it makes sense. But if an earthquake hits, if external turbulence strikes, that rigid brick tower simply cracks and collapses. The modern stakeholder CEO has to be like a modern structural engineer building a skyscraper on a massive fault line. You don't build it rigid, you install base isolators, massive tuned mass dampers, and flexible joints. The CEO designs the organization so that it must sway and flex in deep harmony with the shifting external environment, the shifting demands of the stakeholders. If the organization cannot flex, if it tries to stand rigid against the social and political earthquakes, it will fall. The CEO's job is to engineer that flexibility. That is a brilliant way to conceptualize it.
The flexibility is the survival mechanism. But to make that engineering possible, Freeman highlights a harsh, unforgiving operational reality. If the internal reward systems aren't fundamentally changed, the new building will never get built. If you tell a CEO to be a visionary structural engineer who balances all these complex forces, but you continue to pay their multi-million-dollar bonus purely on the quarterly profitability of the top floors, they will ignore the foundation. Managers are rational actors. They will always revert to old, destructive behaviors if the financial incentives don't strictly align with the new enterprise strategy. The transactional reality, how people get paid and promoted, must perfectly match the rational philosophy, or the entire theory is just academic noise. Thank you for joining us on this incredibly intimate, detailed, and expansive exploration of Freeman's seminal text. As you pack up your notes, close your laptop, and prepare for the next step in your own academic journey, we want to leave you with a final provocative thought to chew on. Building on everything we've discussed today, if a modern corporation actually manages to perfectly balance all of its stakeholders, adopting this radical externalism and giving equal weight to the community, the environment, and the employee, does it essentially cease to be a traditional business and become something closer to a quasi-governmental public utility? And as you begin your own research, ask yourself this. In our current age of hyperconnectivity, where a single 15-second viral video on social media can create 1 million furious, highly coordinated new stakeholders overnight. Is a truly stable stakeholder map even possible anymore? Or are we entering an era of continuous, fluid corporate identity where the structural blueprints are forever changing, and we must learn to navigate the turbulence by touch, empathy, and constant adaptation alone? Keep questioning the frameworks around you. Trust your relentless curiosity, and we will be right here next time to turn the page with you. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পাভলভ। আর আমি নিকিতা। বব, কলিংউডের গল্পটা একটু কল্পনা করা যাক। চারপাশের পরিবেশ বেশ শান্ত, কিন্তু ববের মাথার ভেতর সেখানে চলছে এক তুমুল ঝড়। বব তো একটা অত্যন্ত সফল মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সিইও, তাই না? একদম। আর তার সামনের ডেস্কে রাখা কফির মগটা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, কারণ আসলে সেদিকে তাকানোর সময়টুকুও তার নেই। এত বড় কোম্পানির সিইও, তার তো আসলে দম ফেলারও সময় পাওয়ার কথা না। রাইট। অত্যন্ত মেধাবী আর দক্ষই মানুষটার সামনে আজ যেন পাহাড় সমস্যা। একদিকে ধরুন, স্টেট লেজিসলেচারে কোম্পানির বিরুদ্ধে একটা নতুন আইনের শুনানি চলছে। ও আচ্ছা, আইনি ঝামেলা। হ্যাঁ। আর আরেকদিকে তাদের একটা নতুন প্রোডাক্টের টেস্ট মার্কেটিং নিয়ে তৈরি হয়েছে চরম জটিলতা। ক্রেতা অধিকার সংরক্ষণে সোচ্চার একটা জোট সকাল থেকেই হেডকোয়ার্টার্সের সামনে প্ল্যাকার্ড হাতে বিশাল প্রতিবাদ শুরু করে দিয়েছে। বাপরে, আর কিছু বাকি আছে? আছে তো। শহরের অন্য প্রান্তে পরিবেশবাদীদের একটা বড় আন্দোলন চলছে কোম্পানির কারখানা দূষণ নিয়ে। আর এসবের সাথে যোগ হয়েছে শ্রমিক ইউনিয়নের সর্বাত্মক ধর্মঘটের হুমকি। চারদিক থেকেই চাপ আসছে। একদম। স্প্রেডশিটে কোম্পানির ব্যালেন্স শিট নিখুঁত দেখালেও বাস্তবে প্রফিট বা মুনাফা সেটা ক্রমশই কমছে। বব অসম্ভব দক্ষ লিডার হওয়া সত্ত্বেও এই মুহূর্তে পুরোপুরি দিশেহারা। এতগুলো ভিন্নমুখী আর আপাত দৃষ্টিতে সম্পর্কহীন চাপ একসাথে সামলানোর মতো কোনো সুনির্দিষ্ট ফ্রেমওয়ার্ক তার কাছে নেই। আসলে আধুনিক ব্যবসার এই বহুমাত্রিক বাস্তবতা, এটা শুধু ববের একার গল্প নয়, এটা প্রতিদিনকার কর্পোরেট দুনিয়ার এক নির্মম প্রতিচ্ছবি, তাই না? হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আর পুরনো যুগের ব্যবসার যে সহজ সমীকরণ ছিল, পণ্য বানাও আর বিক্রি করো, সেই দিন তো অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। একদমই। আজকের দিনে একটা ব্যবসাকে সফল হতে গেলে সমাজের এমন সব স্তরের মানুষের কথা ভাবতে হয় যা হয়তো কয়েক দশক আগেও চিন্তার বাইরে ছিল। সমস্যা হলো, বাইরের পরিস্থিতি অনেক দ্রুত বদলে গেলেও ভেতরের চিন্তা করার পদ্ধতিগুলো বদলায়নি। রাইট। আর ঠিক এই চিন্তার শূন্যস্থানটি পূরণ করার জন্যই আমরা আজ এমন একটা বইয়ের গভীরে প্রবেশ করব যা আধুনিক ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবসা পরিচালনার দর্শনকেই পাল্টে দিয়েছে। প্রফেসর আর এডওয়ার্ড ফ্রিম্যানের সেই বিখ্যাত বইটা স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট, আ স্টেক হোল্ডার অ্যাপ্রোচ, তাই তো? হ্যাঁ। যারা ম্যানেজমেন্ট রিসার্চের দুনিয়ায় পা রাখছেন তাদের জন্য এই নামটা কেবল পরিচিতই নয়, বরং
এক প্রকার অবশ্যপাঠ্য। ফ্রিম্যানকে তো আসলে স্টেক হোল্ডার থিওরি আর স্টেক হোল্ডার ক্যাপিটালিজমের জনক বলা হয়। তিনি সেই পুরনো ধারণাকে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছেন, যেখানে মনে করা হতো ব্যবসার একমাত্র কাজ হলো শুধু মালিকদের পকেট ভারী করা। একদম ঠিক। প্রফেসর ফ্রিম্যানের জন্ম 1951 সালের 18 ডিসেম্বর জর্জিয়ার কলম্বাসে। এরপর 1973 সালে তিনি ডিউক ইউনিভার্সিটি থেকে গণিত এবং দর্শনে বিএ কমপ্লিট করেন। আর পিএইচডিও তো ফিলোসফিতেই, তাই না? হ্যাঁ, 1978 সালে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি ইন সেন্ট লুইস থেকে দর্শনে পিএইচডি লাভ করেন তিনি। তারপর তিনি মিনেসোটা ইউনিভার্সিটি এবং ওয়াটন স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন, আর বর্তমানে তিনি ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডডেন স্কুল অফ বিজনেসে অ্যালিস অ্যান্ড সিগনে ওলসন প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছেন। রাইট। আর এই বইটা প্রথম প্রকাশিত হয় 1984 সালে পিটম্যান সিরিজের অংশ হিসেবে। ম্যানেজমেন্টের ইতিহাসে এই কাজটিকে একটি ল্যান্ডমার্ক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কারণ এই বইটি প্রথম অত্যন্ত জোরালোভাবে দেখিয়েছিল যে ব্যবসা এবং পুঁজিবাদ কোনোভাবেই নৈতিকতা বা এথিক্স থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। একদমই। মানে ব্যবসার মূল কাজই হলো এর চারপাশের সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের জন্য ভ্যালু তৈরি করা। এই যুগান্তকারী কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ 2001 সালে ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট এবং অ্যাসপেন ইনস্টিটিউট তাকে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্টের জন্য পায়োনিয়ার অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। আর 2005 সালেও তো ভার্জিনিয়া স্টেট কাউন্সিল অন হায়ার এডুকেশন তাকে আউটস্ট্যান্ডিং ফ্যাকাল্টি অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করেছিল, তাই না? হ্যাঁ, আর 25তম বার্ষিকী উপলক্ষে নতুন প্রজন্মের পাঠকদের কথা মাথায় রেখে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস এর একটা নতুন এডিশন প্রকাশ করেছে, যার লিঙ্কটা আমাদের শো নোটে দেওয়া আছে। রাইট। আচ্ছা, তরুণ গবেষক আর পিএইচডি শিক্ষার্থীদের কথা যখন উঠলই, তখন একটা দারুণ উদ্যোগের কথা জানিয়ে রাখি। একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট সিম ডিভিশনের উদ্যোগটার কথা বলছেন? হ্যাঁ, AOM সিম ডিভিশন। তারা অত্যন্ত নীরবে AOM SIM-Bytes নামে একটা মাসিক উদ্যোগ শুরু করেছে। জুন 2026 থেকে শুরু হওয়া এই উদ্যোগে সিনিয়র স্কলারদের কাছ থেকে রিল স্টাইলের শর্ট ভিডিও প্রকাশ করা হচ্ছে। ওহো, এটা তো খুব ইন্টারেস্টিং। আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো এর প্রথম ইউটিউব শর্টটা করেছেন স্বয়ং প্রফেসর ফ্রিম্যান নিজে। একদম। এই পুরো উদ্যোগটি সিম কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। আর আমাদের এই আয়োজনের প্রডিউসার ময়ূখ মুখোপাধ্যায় নিজেও এই কমিটির একজন সদস্য হিসেবে গত 1 বছর ধরে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে এর কন্টেন্ট ডিজাইন ও সম্পাদনার কাজে ভলেন্টিয়ার হিসেবে যুক্ত আছেন। দারুণ ব্যাপার। এটা মূলত অন্টারিও ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর শেলডন সিমোলার মস্তিষ্কপ্রসূত একটা আইডিয়া। রাইট। আর বর্তমানে শিকাগোর লোয়োলা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জেনিফার গ্রিফিনের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। এই শর্ট ভিডিওগুলো গবেষণার অনেক জটিল ধারণাকে খুব সহজে চোখের সামনে তুলে ধরে। লিঙ্ক কিন্তু শো নোটে দেওয়া থাকবে। হ্যাঁ, আর গবেষণার এই নতুন দিগন্ত নিয়ে যখন কথা হচ্ছে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট বা AOM এর 86তম বার্ষিক সভার কথাও চলে আসে। যারা সেখানে সশরীরে অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য একটা চমৎকার সুযোগ আছে। একদম। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সাইদ বিজনেস স্কুলের ডক্টর মেহেদি মোন্তাকেবের নেতৃত্বে পরিচালিত স্পেস ইকোনমি বা মহাকাশ অর্থনীতি বিষয়ক প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন। এই মাল্টিডিসিপ্লিনারি ওয়ার্কশপে মহাকাশকে ঘিরে ভবিষ্যতের ব্যবসা নিয়ে আলোচনা হবে। আর আমাদের প্রডিউসার ময়ূখ মুখোপাধ্যায়ও এই PDW এর একজন কন্ট্রিবিউটর। এর বিস্তারিত লিঙ্কও শো নোটে দেওয়া থাকবে। যারা শুনছেন তারা আমাদের সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, নতুন গবেষক হিসেবে নিজেদের যাত্রা শুরু করার আগে এই সুচিন্তিত ও মৌলিক টেক্সটবুকটি পড়ার জন্য অবশ্যই কিছুটা সময় বের করবেন। কারণ শেকড়টা চেনা খুব জরুরি। তাহলে সেই শেকড়ের সন্ধানে আমরা আবার আমাদের বব কলিংউডের গল্পে ফিরে যাই, কি বলেন? হ্যাঁ, চলুন। ববের ডেস্কে এতগুলো সমস্যা একসাথে জড়ো হওয়ার কারণ হলো সে পৃথিবীকে দেখছে সম্পূর্ণ ভুল একটা লেন্স দিয়ে। বইয়ের প্রথম 2টি অধ্যায়ে ফ্রিম্যান এই ধারণাগত পরিবর্তনটাই খুব সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে ব্যবসার দৃষ্টিভঙ্গি প্রোডাকশন ভিউ থেকে ম্যানেজারিয়াল ভিউ এবং চূড়ান্তভাবে বর্তমানের স্টেক হোল্ডার ভিউয়ের দিকে সরে এসেছে। আচ্ছা, প্রোডাকশন ভিউটা তো ছিল খুব সরল, তাই না? কোম্পানির কাজ কেবল কাঁচামাল আনা, পণ্য বানানো আর ক্রেতার কাছে বিক্রি করা। একদম তাই। এরপর যখন ব্যবসার পরিধি বড় হলো, মালিকানার সাথে নিয়ন্ত্রণের একটা দূরত্ব তৈরি হলো,
তখন এলো ম্যানেজারিয়াল ভিউ। সেখানে শুধু ক্রেতা বা সাপ্লায়ার নয়, মালিক এবং কর্মীদের কথাও ম্যানেজারদের ভাবতে হতো। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব তো এর চেয়ে অনেক বেশি জটিল। ওই যে রাল্ফ নেদারের মতো ভোক্তা অধিকার কর্মী, পরিবেশবাদী সংগঠন কিংবা বিদেশি প্রতিযোগীদের নতুন কৌশল, হ্যাঁ, এসব কিছু ব্যবসার জগৎকে আমূল বদলে দিয়েছে। ববির এই পরিস্থিতিটা কি অনেকটা ধরুন পুরনো আমলের আটারি কন্ট্রোলার দিয়ে আজকের দিনের অত্যাধুনিক ও জটিল কোনো ভিআর গেম খেলার চেষ্টার মতো নয়? হা, দারুণ একটা অ্যানালজি। সত্যি বলতে একদম তাই। নতুন সমস্যাগুলো মোকাবিলার জন্য তো ববের কাছে পর্যাপ্ত বাটন বা টুলসই নেই। সে পুরনো জয়স্টিক দিয়ে নতুন দুনিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। আর পুরনো জয়স্টিক দিয়ে যেমন নতুন গেম খেলা যায় না, তেমনি পুরনো ফাইলিং সিস্টেম দিয়েও নতুন সমস্যা সামলানো যায় না। ফ্রিম্যান এটাকে একটা ফাইলিং ক্যাবিনেটের সাথে তুলনা করেছেন। আচ্ছা, ফাইলিং ক্যাবিনেট সেটা কেমন? ধরুন কোনো একজন ম্যানেজারের ডেস্কে একটা পুরনো ফাইলিং ক্যাবিনেট আছে। ড্রয়ারগুলোতে ক্রেতা, সাপ্লায়ার, কর্মী এমন সব লেবেল লাগানো। এখন নতুন একটা সমস্যা এলো। ধরুন কারখানার ধোঁয়া নিয়ে পরিবেশবাদীদের বিশাল আন্দোলন। এটা তো আর সাপ্লায়ারের ড্রয়ারে রাখা যাবে না। ঠিক। ম্যানেজার সেটাকে কোথায় রাখবেন? হয়তো বিবিধ বা মিসলেনিয়াস নামের একটা ফোল্ডারে সেটা গুজে রাখা হলো। কিন্তু প্রতিদিন যদি এমন ভিন্ন ভিন্ন নতুন সমস্যা আসতে থাকে, তবে ওই ফাইলিং সিস্টেম একটা সময় পুরোপুরি ভেঙে পড়বে। রাইট। পুরনো সিস্টেমের নতুন তথ্য রাখা যায় না, পুরো কাঠামোটিকেই নতুন করে ঢেলে সাজাতে হয়। একদম। স্টেক হোল্ডার শব্দটি 1963 সালে স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা এসআরআইতে প্রথম ব্যবহৃত হলেও ফ্রিম্যান এর সংজ্ঞাকে এমনভাবে বিস্তৃত করেছেন যাতে ব্যবসা তার পারিপার্শ্বিক সকল প্রভাবককে এই নতুন ফাইলিং সিস্টেমে একটা নির্দিষ্ট জায়গা দিতে পারে। পুরনো ফাইলিং ক্যাবিনেট বাতিল করে নতুন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করার অর্থ হল এই নতুন স্টেক হোল্ডারদের নিখুঁতভাবে ম্যাপ করতে হবে। বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে এই ম্যাপ করার মেকানিজম নিয়ে খুব চমৎকার আলোচনা আছে। হ্যাঁ, যেখানে রেশনাল, প্রসেস এবং ট্রানজ্যাকশনাল এই তিনটি লেভেলের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এগুলো তো খাতা কলমের কথা। বাস্তবে এগুলো কিভাবে কাজ করে তার পেছনে লজিকটা আসলে কি? লজিকটা খুব প্রায়োগিক। ধরুন একটা মাইনিং বা খনি কোম্পানি নতুন একটা এলাকায় খনন কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। রেশনাল লেভেল হলো খাতা কলমে ম্যাপ করা, মানে কে কে এই প্রজেক্টের সাথে যুক্ত। হয়তো স্থানীয় অধিবাসী, পরিবেশবাদী সংগঠন আর সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থা। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। এরপর আসে প্রসেস লেভেল, অর্থাৎ কোম্পানির ভেতরের কাঠামোগুলো কি এই বাইরের মানুষগুলোর চাওয়া পাওয়া বুঝতে পারছে? কোম্পানির ভেতরে কি এমন কোনো দল আছে যারা প্রতিনিয়ত ওই স্থানীয় অধিবাসীদের মনোভাব পর্যবেক্ষণ করছে? রাইট। আর সবশেষে ট্রানজ্যাকশনাল লেভেল হলো একদম মাঠে নেমে কাজ করা। যখন কোম্পানি প্রতিনিধিরা স্থানীয় নেতাদের সাথে বসে একটা টাউন হল মিটিংয়ে আলোচনা করেন এবং একটা চুক্তিতে পৌঁছান, সেটাই ট্রানজ্যাকশন। এই তিনটি লেভেলের মধ্যে যখন নিরবিচ্ছিন্ন সমন্বয় থাকে, তখনই প্রতিষ্ঠান সফল হয়। এখানেই স্টেক হোল্ডার ডিলেমার বিষয়টা চলে আসে। এই ডিলেমা কি গেম থিওরির সেই বিখ্যাত প্রিজনার্স ডিলেমার মতো কাজ করে, যেখানে উভয়েরই ক্ষতি হবার একটা শঙ্কা থাকে? হুবহু তাই। প্রিজনার্স ডিলেমার মতোই এখানেও যদি দুটি পক্ষ, ধরন কোম্পানি এবং কোনো স্থানীয় অ্যাক্টিভিস্ট গ্রুপ, পরস্পর আপোষহীন বা হার্ডবল আচরণ করে, তবে উভয়েরই চরম ক্ষতি হয়। কোম্পানি হয়তো আইনি লড়াইয়ে প্রচুর টাকা খরচ করে এবং তাদের সুনাম নষ্ট হয়। হ্যাঁ, আর অন্যদিকে অ্যাক্টিভিস্ট গ্রুপও হয়তো শেষ পর্যন্ত তাদের দাবি আদায় করতে পারে না। প্রত্যেকেই ভাবে যে তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করছে, কিন্তু দিন শেষে ফলাফল হয় শূন্য। তাই ফ্রিম্যান ভলেন্টারিজম বা স্বেচ্ছায় আলোচনার মাধ্যমে উইন উইন, উভয়ের জন্য লাভজনক সমাধানের মেকানিজম তৈরি করার কথা বলেছেন। কিন্তু এই স্বেচ্ছায় আলোচনার ভিত্তিটা তৈরি করতে হলে তো কোম্পানিকে আগে নিজের অবস্থান সম্পর্কে খুব পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে। চতুর্থ অধ্যায়ে যে এন্টারপ্রাইজের স্ট্র্যাটেজির কথা বলা হয়েছে, তার মূল প্রশ্নই হলো, আমরা কিসের প্রতিনিধিত্ব করি? আমাদের মূল আদর্শ কি? একদম ঠিক। আধুনিক সমাজে কাজ করতে গেলে তো কোম্পানিকে নানা ধরনের আদর্শিক চাপের মুখে পড়তে হয়। একটা বিষয় আমি এখানে পরিষ্কার করে বলে রাখি, আমরা কিন্তু এখানে ডানপন্থী বা বামপন্থী কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের পক্ষ নিচ্ছি না।
আমরা কেবল বইয়ের তাত্ত্বিক কাঠামোটা নিয়ে আলোচনা করছি। অবশ্যই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থান থেকেই আমরা এটা বিশ্লেষণ করছি। তো যেটা বলছিলাম, কখনো হয়তো পরিবেশ বা শ্রম অধিকার নিয়ে বামপন্থী রাজনৈতিক দর্শনের চাপ আসে, আবার কখনো মুক্ত বাজার বা ডিরেগুলেশনের পক্ষে ডানপন্থী চাপ তৈরি হয়। একটা কোম্পানি এই দুই মেরুর চাপ সামলে কিভাবে নিজেদের আদর্শ ঠিক রাখে? ফ্রিম্যানের ফ্রেমওয়ার্ক এখানে কোম্পানিকে শেখায় কিভাবে এই আদর্শিক চাপগুলোকে একটা কৌশলগত উপাদান হিসাবে বিশ্লেষণ করতে হয়। কোনো কোম্পানির লক্ষ্য যদি হয় টেকসই উন্নয়ন, তবে তারা হয়তো পরিবেশবাদী গ্রুপগুলোর দাবিগুলোকে তাদের উদ্ভাবনের চালিকা শক্তি হিসেবে ব্যবহার করবে। রাইট। আবার একই সাথে ব্যবসার গতিশীলতা বজায় রাখতে ডানপন্থী পলিসি মেকারদের সাথেও তাদের নেগোসিয়েট করতে হবে। সমস্যাটা তখনই হয় যখন কোম্পানি সেলফ ডিসেপশন বা আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হয়। এই আত্মপ্রবঞ্চনার বিষয়টা খুব কৌতূহল উদ্দীপক। মানে কোম্পানিগুলো কাগজে কলমে যে আদর্শের কথা বলে আর বাস্তবে যা করে, তার পার্থক্য কি এখানেই প্রকট হয়ে ওঠে? এই ফাঁদ থেকে বেরোনোর উপায় হিসেবে কি স্টেক হোল্ডার অডিটের কথা বলা হয়েছে? হ্যাঁ, ধরুন কোনো কোম্পানি হয়তো বিশাল বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করছে যে তারা শতভাগ পরিবেশ বান্ধব, কিন্তু বাস্তবে তাদের সাপ্লাই চেনের কোনো একটা ধাপে হয়তো শিশুশ্রম ব্যবহার হচ্ছে বা নদী দূষণ হচ্ছে। ও আচ্ছা। যখন কোম্পানির ভেতরের মানুষরাও নিজেদের এই মিথ্যে বিজ্ঞাপনটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে, তখন সেটাই সেলফ ডিসেপশন। স্টেক হোল্ডার অডিট হলো এমন একটা মেকানিজম যা আয়নার মতো এই সত্যটাকে সামনে এনে দাঁড়ায়। মানে এটা কোম্পানিকে বাধ্য করে ডেটা দিয়ে প্রমাণ করতে যে তাদের বর্তমান পলিসিগুলো কি সত্যি স্টেক হোল্ডারদের সন্তুষ্ট করছে, নাকি তারা কেবল নিজেদের মনগড়া একটা ধারণার উপর ভর করে আছে। অডিটের মাধ্যমে এই ফাঁকগুলো ধরা পড়ে। একদম। একবার যখন অডিটের মাধ্যমে কোম্পানির নিজস্ব আদর্শ এবং বাস্তবের স্টেক হোল্ডারদের দাবিগুলো পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন পরবর্তী ধাপ হল মাঠে নেমে স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়ন করা। পঞ্চম অধ্যায়ে ফ্রিম্যান স্টেক হোল্ডারদের আচরণের বিশ্লেষণের কথা বলেছেন। একজন স্টেক হোল্ডার কি কোঅপারেটিভ পোটেনশিয়াল, অর্থাৎ সহযোগিতার সুযোগ নিয়ে আসছে, নাকি কম্পিটিটিভ থ্রেট বা প্রতিযোগিতামূলক হুমকি তৈরি করছে? সেটাই। রাইট। এখানে বইয়ের ইউএস সুপারসনিক ট্রান্সপোর্ট বা এসএসটি এর গল্পটা বোধহয় খুব চমৎকার একটা উদাহরণ। আচ্ছা, ওই 60 দশকের প্রজেক্টটা। হ্যাঁ, ইউএস সুপারসনিক ট্রান্সপোর্টের ঘটনাটা স্টেক হোল্ডারদের শক্তি বুঝতে না পারার একটা টেক্সট বুক উদাহরণ। 1963 সালের দিকে আমেরিকা ম্যাক 3 গতির একটা সুপারসনিক যাত্রীবাহী বিমান তৈরির বিশাল প্রজেক্ট হাতে নিয়েছিল। তখন তো রবার্ট ম্যাকনামারার নেতৃত্বাধীন প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাডভাইজারি কমিটি আর এফএএ শুধু প্রযুক্তিগত দিক আর বিমানের গতি নিয়েই ভেবেছিল, তাই না? একদম। তারা সাধারণ মানুষের কথা চিন্তাই করেনি, কিন্তু বিমানটি আকাশে উড্ডয়নের সময় যে সনিক বুম বা বিকট শব্দ তৈরি করত, তা জানালা ভেঙে ফেলার মতো শক্তিশালী ছিল। বাপরে! ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষ এবং পরিবেশবাদীরা তীব্র প্রতিবাদ শুরু করে। এই সামাজিক চাপের কারণে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস থেকে প্রজেক্টের ফান্ডিংই বন্ধ হয়ে যায়। একটা নিছক প্রযুক্তিগত প্রকল্প কিভাবে মুহূর্তের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্টেক হোল্ডারদের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়, সেটা এই উদাহরণ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এখান থেকেই তো শিক্ষা নিয়ে 6ষ্ঠ অধ্যায় রিসোর্স অ্যালোকেশন বা সম্পদের সঠিক বন্টনের কথা বলা হয়েছে। মানে যদি কোনো নির্দিষ্ট স্টেক হোল্ডার কোম্পানির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে শুধু মুখে বললেই হবে না, বাজেটে আর লোক বলে তার প্রতিফলন থাকতে হবে। ঠিক তাই। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে, এই এত সব স্টেক হোল্ডারকে খুশি করতে গিয়ে কি কোম্পানিগুলো আরেকটা বড় বিপদে পড়ে না? আমি অ্যানালাইসিস প্যারালাইসিসের কথা বলছি। অতিরিক্ত বিশ্লেষণ। হ্যাঁ, অতিরিক্ত রং বেরঙের স্টেক হোল্ডার ম্যাপ আঁকতে গিয়ে আর চারপাশের সবার দাবি শুনতে গিয়ে কি ম্যানেজাররা বাস্তবে সিদ্ধান্ত নিতে ভুলে যান না? এই অতিরিক্ত বিশ্লেষণই কি শেষ পর্যন্ত তাদের পঙ্গু করে দেয়? হলো অতিরিক্ত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোনো সিদ্ধান্তই নিতে না পারা। একটা কোম্পানির সব স্টেক হোল্ডার কিন্তু সমান গুরুত্বপূর্ণ বা সমান প্রভাবশালী নয়। রাইট। আপনি যদি ম্যাপ আঁকতেই থাকেন আর চারপাশের সবার মন জয় করার অবাস্তব চেষ্টা করেন, তবে বাস্তবে কোনো কাজই করতে পারবেন না। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত বাস্তবমুখী আর ফলপ্রসূ লেনদেন নিশ্চিত করা। কোম্পানিকে অগ্রাধিকার ঠিক করতে হবে কাদের সাথে এখনই কাজ করা জরুরি আর কাদেরকে আপাতত পর্যবেক্ষণে রাখলেই চলবে। কিন্তু এখানেই তো স্নেল ডাটার ফ্যালাসির ধারণাটা একটা বড় কাউন্টার পয়েন্ট হিসেবে চলে আসে। হ্যাঁ, এটাও একটা বড় ফাঁদ। মানে বড়দের দিকে নজর দিতে গিয়ে যদি কোম্পানিগুলো খুব
ছোট কিন্তু অত্যন্ত প্রভাবশালী কোনো স্টেক হোল্ডারকে অবজ্ঞা করে বসে, তার ফলাফল তো আরও ভয়াবহ হতে পারে। যেমন আমেরিকার একটা বড় ড্যাম তৈরির প্রজেক্ট আটকে গিয়েছিল শুধু একটা অতি ক্ষুদ্র প্রজাতির মাছ, স্নেল ডার্টার এর অস্তিত্ব রক্ষার আইনি লড়াইয়ের কারণে। একদম সত্যি। অর্থাৎ আকার ছোট হলেই যে তার ক্ষমতা কম, এমনটা ভেবে নেওয়ার কোনো অবকাশ নেই। আর ঠিক ওই জায়গাটাতেই ম্যানেজারদের আসল দক্ষতার পরীক্ষা হয়। কোন স্টেক হোল্ডার আকারে ছোট হলেও আইনি বা সামাজিকভাবে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে সেটা চিহ্নিত করতে পারাটাই স্টেক হোল্ডার ভিউয়ের মূল কথা। রাইট। আর এই কাজগুলো করার জন্য প্রতিষ্ঠানের ভেতরের কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে বইয়ের শেষ অংশে, বিশেষ করে 7ম, 8ম এবং 9ম অধ্যায়ে। পুরো প্রতিষ্ঠানকে বাইরের জগতের দিকে নজর দিতে হলে ভেতরের মানুষদের ভূমিকার বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে বাধ্য। 7ম অধ্যায় দেখায় কিভাবে কোম্পানির বোর্ডের ভেতরে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় আর তা কিভাবে সামলানো যায়। এর পাশাপাশি 8ম অধ্যায়ের বাউন্ডারি স্প্যানার ধারণাটাও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। পাবলিক রিলেশনস বা পিআর এবং মার্কেটিং বিভাগের কাজ আগে ছিল শুধু বাইরের দুনিয়ায় কোম্পানির হয়ে গুণগান গাওয়া। কিন্তু ফ্রিম্যান দেখাচ্ছেন এই বিভাগগুলোকে এখন বাইরের দুনিয়ার সাথে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করতে হবে। এর মেকানিজমটা আসলে কি? মেকানিজমটা হল তথ্যের প্রবাহকে দ্বিমুখী করা। পিআর বা মার্কেটিং এখন আর শুধু লাউডস্পিকার নয়, তারা কোম্পানির শ্রবণ যন্ত্র হিসাবেও কাজ করবে। দারুণ বলেছেন, শ্রবণ যন্ত্র। বাইরের দুনিয়ার ক্ষোভ, পরিবেশবাদীদের দাবি বা ভোক্তাদের নতুন প্রত্যাশাগুলোকে তারা শুনবে, আর সেই তথ্যগুলোকে কোম্পানির ভেতরের নীতি নির্ধারকদের ভাষায় অনুবাদ করে তাদের কাছে পৌঁছে দেবে। তারা বাইরের দুনিয়া এবং ভেতরের কর্পোরেট কাঠামোর মাঝখানে একটা সেতু তৈরি করে। আর এই পুরো প্রক্রিয়াটাকে যিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন, সেই জেনারেল ম্যানেজারের ভূমিকাটাও তো 9ম অধ্যায়ে একদম ভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে। হ্যাঁ, সেখানে একটা বড় শিফট আছে। মানে গতানুগতিক বস বা নির্দেশদাতার ধারণাকে পুরোপুরি বদলে দিয়ে এই ফ্রেমওয়ার্ক ম্যানেজারকে একজন দক্ষ অর্কেস্ট্রা কন্ডাক্টর বা সমন্বয়কে পরিণত করে। চমৎকার একটা তুলনা। একজন কন্ডাক্টর যেমন বেহালা, বাঁশি আর ড্রামের সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন শব্দকে মিলিয়ে একটা অপূর্ব সুর তৈরি করেন, আধুনিক ম্যানেজারকেও ঠিক তেমনি কর্মী, ক্রেতা, পরিবেশবাদী আর শেয়ার হোল্ডারদের ভিন্ন ভিন্ন দাবিকে মিলিয়ে কোম্পানির জন্য একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। আধুনিক ম্যানেজমেন্ট গবেষণায় ফ্রিম্যানের এই বইটি এ কারণেই একটা পূর্ণাঙ্গ রোডম্যাপ। নতুন গবেষকরা যখন এই বইটি পড়বেন, তারা দেখবেন যে এটি শুধু কিছু তথ্যের সমষ্টি নয়, বরং সমাজ ও ব্যবসার মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করার একটা দার্শনিক ভিত্তি। একদমই তাই। ফ্রিম্যানের মূল দর্শনের জায়গাটি আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে। ব্যবসা ও পুঁজিবাদ কোনোভাবেই নৈতিকতা বা মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। জ্ঞান বা তাত্ত্বিক আলোচনা তখনই সবচেয়ে মূল্যবান হয় যখন সেটি বাস্তবে অনুধাবন ও প্রয়োগ করা হয়। পুঁজিবাদের প্রকৃত সাফল্য কেবল মুনাফায় নয়, বরং সমাজের প্রতিটি স্টেক হোল্ডারের জন্য ভ্যালু বা মান সৃষ্টির মধ্যে নিহিত। সত্যিই অসাধারণ। এই আলোচনার একেবারে শেষে এসে যারা শুনছেন এবং বিশেষ করে নতুন গবেষকদের জন্য আমি একটা নতুন ও কৌতূহলোদ্দীপক ভাবনার জায়গা তৈরি করে দিতে চাই। সেটা কি? যেটা হয়তো এই বইয়ের মূল বিষয়কে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে পারে। আমরা এতক্ষণ মানুষ, সংগঠন বা পরিবেশকে স্টেক হোল্ডার হিসেবে দেখলাম, কিন্তু ভেবে দেখুন বর্তমান বিশ্ব প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। হ্যাঁ, তা তো বটেই। অদূর ভবিষ্যতে যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এবং অ্যালগরিদমগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বাধীন ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করবে, তখন কি এই এআইকেও আমাদের একটা নতুন ও স্বাধীন স্টেক হোল্ডার হিসেবে ম্যাপ করার প্রয়োজন পড়বে? ও ওয়াও, এটা সত্যি ভাবার মতো একটা বিষয়। রাইট। মানুষের বাইরে কি অ্যালগরিদমও ভবিষ্যতে ব্যবসার গতি প্রকৃতি নির্ধারণকারী একটা শক্তিশালী স্টেক হোল্ডার হয়ে উঠতে পারে? নতুন গবেষকদের জন্য এটি হতে পারে গবেষণার এক দারুণ নতুন দিগন্ত। একদম, এটা নিয়ে রিসার্চ করার অনেক স্কোপ আছে। আজকের এই দীর্ঘ এবং চিন্তার খোরাক জোগানো আলোচনায় আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বিস্তারিত জানতে এবং বইটির খোঁজ পেতে শোনোটের লিঙ্কগুলো অবশ্যই চেক করবেন। ভালো থাকবেন, শুভ বিদায়।
नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। सीधे कहानी से शुरुआत करते हैं। एक मैनेजर हैं बॉब कॉलिंगवुड। अच्छा, वुडलैंड इंटरनेशनल वाले ना? हाँ वही। तो बॉब उस बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के यूएस सब्सिडियरी के सीईओ हैं और एक ही हफ्ते के अंदर उनके सामने चुनौतियों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया है जिसे देखकर मतलब किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर दे। चुनौतियां मतलब किस तरह के संकट आए उनके सामने एक साथ? मतलब आप देखिए, एक तरफ स्टेट लेजिस्लेचर उनकी कंपनी के खिलाफ बिल्कुल नए और सख्त नियम ला रही हैं, दूसरी तरफ कंज्यूमर ग्रुप्स उनके प्रोडक्ट्स का विरोध कर रहे हैं सड़कों पर। ओ बाप रे, ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। और बस इतना ही नहीं, एनवायरमेंटलिस्ट्स उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ठीक बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और यूनियन अलग से नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगातार हड़ताल की धमकी दे रही है। और इन सब कश्मकश के बीच कंपनी का आर्थिक हाल कैसा है? वही तो मैं बताने वाली थी। प्रॉफिट अचानक से 20% तक गिर चुका है। बॉब वैसे तो बहुत अनुभवी मैनेजर हैं, कुशल हैं, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की सारी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं। पर ऐसी स्थिति में पुरानी थ्योरियां काम आती नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा। उनके पुराने सारे औजार बेकार हो गए हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इन अलग अलग आवाजों को और इन आपस में टकराते हुए संकटों को एक साथ कैसे संभाला जाए, क्योंकि एक को खुश करने पर दूसरा नाराज हो जाता है। एग्जैक्टली यही सबसे बड़ी उलझन है। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि बॉब की ये स्थिति सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है। सही कहा, आजकल हर संस्था की यही सच्चाई है। हाँ, ये आज के दौर में हर बड़ी संस्था, हर स्टार्टअप और मल्टीनेशनल कंपनी की असली सच्चाई बन चुकी है। दरअसल यही वो चौराहा है जहां से प्रोफेसर आर एडवर्ड फ्रीमैन की ऐतिहासिक पुस्तक की शुरुआत होती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अ स्टेक होल्डर अप्रोच वाली पुस्तक है ना? हाँ वही। इस किताब का मूल आधार यही है। जब चारों तरफ से ऐसी आवाजें उठ रही हों जिनका आपस में कोई सीधा लेन देन ना हो, तब पुराने बिजनेस नजरिए से सदियों से चले आ रहे तरीकों से काम नहीं चल सकता। तो पुस्तक एक नए फ्रेमवर्क की जरूरत को समझाती है। बिल्कुल। और इस नए नजरिए को दुनिया के सामने लाने वाले प्रोफेसर फ्रीमैन को आज हम स्टेक होल्डर थियरी और स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का जनक मानते हैं। हाँ, उनका जो शुरुआती सफर था वो भी बहुत दिलचस्प है। अगर उनके बारे में थोड़ा बताऊं तो उनका जन्म 18 दिसंबर 1951 को हुआ था कोलंबस जॉर्जिया में। और उनकी पढ़ाई का कॉम्बिनेशन भी अपने आप में एकदम अनोखा था। सही कहा। उन्होंने 1973 में ड्यूक यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स और फिलॉसफी में बीए किया और फिर 1978 में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस से फिलॉसफी में पीएचडी हासिल की। मैथ्स की लॉजिक और फिलॉसफी की गहराई, ये दोनों मिलकर ही इतनी बड़ी थ्योरी बना पाए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा और वॉटन स्कूल जैसे दिग्गज संस्थानों में पढ़ाया। और आजकल वो कहाँ हैं? आज वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के डार्डन स्कूल ऑफ बिजनेस में एलिस एंड सिग्ने ओल्सन प्रोफेसर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। उनके विचारों ने दुनिया को इतना प्रभावित किया कि 2001 में उन्हें वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और एस्पेन इंस्टीट्यूट द्वारा पायनियर अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। अरे वाह। और शायद 2005 में भी उन्हें कोई बड़ा सम्मान मिला था। हाँ, वर्जीनिया स्टेट काउंसिल ऑन हायर एजुकेशन ने उन्हें आउटस्टैंडिंग फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया था। उनकी इस पुस्तक का इतिहास भी अपने आप में किसी क्रांति से कम नहीं है। इसका जो पहला संस्करण था वो 1984 में पिटमैन सीरीज के तहत छप कर आया था, जो उस वक्त बिजनेस एंड पब्लिक पॉलिसी पर केंद्रित थी, है ना? बिल्कुल। और बिजनेस मैनेजमेंट के विकास में ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम साबित हुआ जिसने कैपिटलिज्म को नैतिकता के साथ, मतलब एथिक्स के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया। पुस्तक ने यही सिखाया कि व्यापार आखिरकार स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने का एक आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगता है कि इसके प्रकाशन की 25वीं वर्षगांठ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक नया प्रिंट ऑन डिमांड एडिशन निकाला था ताकि नए रिसर्चर्स इस मूल विचार से जुड़ सकें, जिसका लिंक हमने शो नोट्स में डाल दिया है। ये नए पाठकों के लिए बहुत जरूरी कदम था। और इस चर्चा की गहराई में उतरने से पहले एक बहुत ही शांत और आत्मीय जानकारी उन सभी के साथ साझा करना चाहूंगी जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, विशेष रूप से उनके लिए जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में बिल्कुल नए हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी ऐलान है उनके लिए। एकेडमिक ऑफ मैनेजमेंट की सिम डिवीजन ने ना चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के एक नया मासिक इनिशिएटिव शुरू किया है। इसका नाम AOM SIM-Bytes है। AOM SIM-Bytes।
ये तो जून 2026 से शुरू हो रहा है ना? हाँ जी, इस इनिशिएटिव में सीनियर स्कॉलर्स द्वारा अर्ली करियर स्कॉलर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए रील स्टाइल शॉर्ट वीडियोस बनाए गए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसका पहला यूट्यूब शॉर्ट किसी और का नहीं बल्कि प्रोफेसर एड फ्रीमन का ही है। वही जिनको हम फादर ऑफ स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म कहते हैं। क्या बात है, इसे सिम करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी लीड कर रही है। बिल्कुल, और हमारे जो पॉडकास्ट प्रोड्यूसर हैं वो इस कमेटी के सदस्य हैं और पिछले 1 साल से इसके कंटेंट डिजाइन और एडिट के लिए सक्रिय रूप से वॉलंटियर कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव दरअसल प्रोफ शेल्डन सिमोला की सोच का नतीजा है, जो ट्रेंथ यूनिवर्सिटी ओंटारियो से हैं, और अब इसे कमेटी चेयर प्रोफ जेनिफर ग्रिफिन, जो लोयोला यूनिवर्सिटी शिकागो से हैं, वो आगे बढ़ा रही हैं। सही कहा, और इसका लिंक भी शो नोट्स में उपलब्ध है। एक और ज़रूरी जानकारी यह है कि अगर आप में से कोई भी फिलाडेल्फिया यूएसए में एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के 86th एनुअल मीटिंग में हिस्सा लेने की योजना बना रहा है तो वहाँ एक बड़ा इवेंट होने वाला है। आप स्पेस इकोनॉमी वाले प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप यानी पीडीडब्ल्यू की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल वही, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइद बिजनेस स्कूल के डॉक्टर मेहदी मोंटे का भी लीड कर रहे हैं। हमारे पॉडकास्ट प्रोड्यूसर मयूख मुखोपाध्याय भी इस मल्टी डिसिप्लिनरी और हाईली एंटरप्रेन्योरियल वर्कशॉप में एक कंट्रीब्यूटर हैं। उन सभी के लिंक्स शो नोट्स में हैं। इन ऐलानों के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस चर्चा को सुनने वाले चाहे इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर अपना थोड़ा वक्त निकालकर इस बेहतरीन टेक्स्ट बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। हाँ, नई रिसर्चर के लिए ये एक ऐसी शुरुआत होगी जो उन्हें शोध के नए आयाम दिखाएगी। तो चलिए वापस अपने मूल विषय पर आते हैं, बॉब कॉलिंगवुड की उस उलझन पर जहां से हमने बात शुरू की थी। हाँ, बॉब की उलझन। अगर हम इस संकट के बिल्कुल जड़ में जाएं तो समझ आएगा कि दुनिया का व्यापारिक माहौल पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन हमारी पुरानी थ्योरियां वहीं अटकी हुई हैं। मतलब पहले थ्योरी अलग हुआ करती थी? बिल्कुल। शुरुआती दौर में सिर्फ प्रोडक्शन व्यू चलता था, यानी सप्लायर ने रॉ मटेरियल दिया, कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और कस्टमर ने उसे खरीद लिया। स्थिति बिल्कुल सीधी और आसान थी उस वक्त। हाँ, फिर जब कंपनियां थोड़ी बड़ी हुई तो मैनेजरियल व्यू आया, जिसमें सिर्फ शेयर होल्डर्स और कर्मचारियों के आपस के रिश्तों को शामिल किया गया। लेकिन अब हम जिस व्यापक स्थिति में हैं, वहाँ इन पुराने तरीकों से काम नहीं चलने वाला। नहीं चल सकता, क्योंकि बाहरी दुनिया व्यापार के बिल्कुल अंदर घुस आई है। इस बदलाव को समझाने के लिए ना एक बहुत ही आसान और व्यवहारिक एनालॉजी दी जा सकती है, जिसे फाइलिंग कैबिनेट की एनालॉजी कहते हैं, पहले चैप्टर से। ओ हाँ, फाइलिंग कैबिनेट वाला उदाहरण वो बहुत सटीक है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए एक सीईओ के ऑफिस में एक फाइलिंग कैबिनेट है। उसमें पिछले 50 साल से कुछ तयशुदा फोल्डर्स रखे हैं, जैसे सप्लायर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर्स, जो पुराने व्यू के हिसाब से ठीक थे। बिल्कुल। लेकिन अचानक एक दिन सप्लाई चेन में हो रहे किसी शोषण को लेकर सोशल मीडिया पर एक वायरल बॉयकॉट कैंपेन शुरू हो जाता है। अब मैनेजर परेशान है कि इस नई परेशानी को इन पुराने फोल्डर्स में से किस फोल्डर में डालें। तो वो क्या करेगा? वो उसको उठाकर मिसलेनियस यानी अन्य फोल्डर में डाल देगा। सही कहा। अगले दिन क्लाइमेट चेंज की वजह से अचानक एक नया गवर्नमेंट रेगुलेशन आ जाता है। वो कहाँ जाएगा? वो भी मिसलेनियस में चला जाता है। और इसका असर ये होगा कि कुछ ही दिनों में हालात ऐसी हो जाएगी कि उस कैबिनेट में मिसलेनियस फोल्डर बाकी सारे फोल्डर से बड़ा हो जाएगा और कैबिनेट टूटने की कगार पर आ जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका फाइलिंग सिस्टम पूरी तरह पुराना हो चुका है। ये दुनिया ऐसी नहीं रही जिसे उन पुराने फोल्डर्स में समेटा जा सके। यही वो मोड़ है जहां स्टेक होल्डर अप्रोच एक नए आधुनिक सिस्टम के रूप में उभरता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस स्टेक होल्डर शब्द की उत्पत्ति कोई नया बज़वर्ड नहीं है। हाँ, मतलब ये कब शुरू हुआ था? ये शब्द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SRI के 1963 के एक इंटरनल मेमो से प्रकाश में आया था। वहाँ इसका मतलब बहुत ही गहरा था। क्या मतलब था उसका? थोड़ा आसान भाषा में बताइए। इसका अर्थ था वो हर व्यक्ति या हर समूह जो किसी संस्था के लक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है या उन लक्ष्यों के पूरा होने से खुद प्रभावित होता है। ये शेयर होल्डर से बहुत आगे की सोच थी। तो सवाल ये आता है कि इस इतनी विशाल संकल्पना को आखिर जमीन पर कैसे उतारा जाए? सिर्फ हवा में बातें करने से तो काम नहीं चलेगा। उसके लिए चैप्टर 3 में लागू करने के 3 अलग अलग स्तर बताए गए हैं। पहला रैशनल लेवल, दूसरा प्रोसेस लेवल
और तीसरा ट्रांजैक्शनल लेवल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं पहले स्तर यानी रैशनल लेवल की बात करूं, जहाँ एक संस्था को अपना स्टेक होल्डर मैप बनाना होता है, ये सुनने में व्हाइट बोर्ड पर बनाई गई एक बहुत अच्छी थ्योरी तो लगती है, पर क्या ये सचमुच में मुमकिन है? हाँ, वही मेरा सवाल है कि एक बड़ी कंपनी के तो हजारों स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। क्या उन सब की एक लिस्ट बनाना और उनकी ज़रूरतों को मैप करना अपने आप में एक असंभव काम नहीं लगता? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और यही वजह है कि इस फ्रेमवर्क को सिर्फ एक सूची बनाने तक सीमित नहीं रखा गया है। रैशनल लेवल पर मैप बनाने का मकसद सबको पूरी तरह से खुश करना नहीं है। तो इसका असली मकसद क्या है? इसका असली मकसद अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचानना है। संस्था को कम से कम ये पता होना चाहिए कि मैदान में खिलाड़ी कौन कौन हैं और उनका प्रभाव कितना हो सकता है। इसके बाद आता है प्रोसेस लेवल, यानी उनके साथ काम करने का तरीका। बिल्कुल। मैप बनाने के बाद आपके पास ऐसे प्रोसीजर्स होने चाहिए जिनके जरिए आप लगातार इस बाहरी दुनिया को स्कैन करते रहें। कैसे एक छोटा सा विरोध आने वाले वक्त का कानून बन सकता है, इसकी झलक इन्हीं प्रोसेसेस से मिलती है। और तीसरा लेवल था ट्रांजैक्शनल लेवल। हाँ, जहां असल बातचीत और लेन देन होता है। आप उन स्टेक होल्डर्स के साथ टेबल पर बैठते हैं, बार्गेन करते हैं, उनसे नेगोशिएट करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक मूल विचार काम करता है जिसे वॉलंटियरिज्म कहा गया है। रुकिए, वॉलंटियरिज्म यानी आत्मनिर्भर होकर भलाई करना। मतलब सरकार या कानून का कोई डंडा ना हो और बड़ी कंपनियां खुद अपनी मर्जी से समाज की भलाई के लिए अपने प्रॉफिट्स का नुकसान करें। ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता सुनने में? अगर हम इसे सिर्फ दान या परोपकार की तरह देखें तो ये वाकई आदर्शवादी लगेगा। लेकिन वॉलंटियरिज्म का आधार परोपकार नहीं है, बल्कि लंबे समय तक मार्केट में जिंदा रहने की एक रणनीति है। ओह, तो इसमें बिजनेस का फायदा छुपा है। बिल्कुल। इसका सीधा सा तर्क ये है कि अगर संस्था खुद से बिना किसी कानूनी दबाव के अपने स्टेक होल्डर्स की ज़रूरतों को एड्रेस नहीं करेगी तो देर सवेर वही स्टेक होल्डर्स इतना बड़ा बवाल खड़ा करेंगे कि सरकार को मजबूरन ऐसे कानून लाने पड़ेंगे जो संस्था को पूरी तरह तबाह कर देंगे। इसीलिए खुद से आगे बढ़कर काम करना दरअसल एक बचाव का तरीका है। सही पकड़ा आपने। इसीलिए चैप्टर 4 में एंटरप्राइज स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है। संस्था को अपने अस्तित्व के बिल्कुल मूल में जाकर एक सवाल पूछना होगा खुद से कि हम आखिर किस चीज के प्रतीक हैं, यानी व्हाट डू वी स्टैंड फॉर। तो जब तक एक सीईओ या मैनेजर को ये नहीं पता होगा कि उनकी कंपनी का वजूद सिर्फ पैसे कमाना है या समाज में कोई विशेष वैल्यू क्रिएट करना, तब तक वो किसी स्टेक होल्डर मैप का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कहा। एक बार जब यह पर्पस साफ हो जाता है तब बारी आती है बाहरी दुनिया के व्यवहार को बारीकी से समझने की और उनके हिसाब से रणनीति ढालने की, जो चैप्टर 5 में बताया गया है। क्या इसका कोई असली उदाहरण है जिससे पढ़ने वालों को थोड़ा और साफ हो सके? हाँ, इस बात को एक असली ऐतिहासिक घटना से बहुत बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो 1960 और 70 के दशक में यूएस की सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट यानी एसएसटी हवाई जहाज बनाने की योजना इसका एक बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण है। एसएसटी मतलब वो जो आवाज से भी तेज चलने वाली फ्लाइट बन रही थी? हाँ, उस वक्त यूएस सरकार, रॉबर्ट मैकनमेरा, एफए और बोइंग ने मिलकर एक ऐसी फ्लाइट बनाने का सपना देखा था। उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स थे, उनका मैथ बिल्कुल सटीक था और बजट की भी कोई कमी नहीं थी। तो फिर दिक्कत कहाँ आई? प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा था। इंजीनियरिंग का मैथ तो कर लिया पर समाज का मैथ करना भूल गए। मतलब उन्होंने आम जनता और पर्यावरण वालों को हल्के में ले लिया। सही पकड़ा। उन्होंने एनवायरमेंटल ग्रुप्स और वहां की आम जनता की ताकत का आकलन ही नहीं किया। उन्हें लगा कि आवाज के प्रदूषण या सोनिक बूम से जनता थोड़ा नाराज होगी, पर वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने उस हिस्से को इग्नोर ही कर दिया। हाँ, उन्होंने व्हाट पर ध्यान दिया कि क्या बनाना है और हाउ पर ध्यान दिया कि कैसे बनाना है। लेकिन हु यानी वो लोग जो इसके असर में आएंगे उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा शायद ये हुआ कि लोग सड़कों पर उतर आए। बिल्कुल। परिणाम ये हुआ कि आम नागरिक आपस में जुड़ गए और एकजुट होकर इतना भारी विरोध किया, कोर्ट्स में गए और आखिरकार उस मल्टी-मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट को पूरी तरह बंद करवाना पड़ा। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि अगर आप अपने स्टेक होल्डर्स की ताकत को कम आंकते हैं तो सबसे बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रैटेजी भी धरी की धरी रह जाती है। सही कहा। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला किस्सा है। लेकिन चलिए, मान लीजिए एक कंपनी ने ये सीख लिया, उन्होंने मैप भी बना लिया
और समझ भी गए कि नजरअंदाज करने का असर क्या होता है, पर जमीन पर इस थ्योरी को आखिर कैसे उतारा जाता है? उसके लिए हमें अमेरिकन सर्विसेज इंटरनेशनल यानी ASI के केस स्टडी को देखना होगा, जो चैप्टर 6 में दिया गया है। क्या इस कंपनी ने सच में इस दृष्टिकोण को लागू किया था? क्योंकि सिर्फ कागज पर स्ट्रैटेजी लिख लेने से तो बाहर खड़े लोग नहीं मानेंगे। ASI ने ये महसूस किया कि उन्हें अपने बदलते माहौल के हिसाब से खुद को पूरी तरह बदलना होगा। उन्होंने सिर्फ एक ईमेल भेजकर अपने मैनेजर्स को अच्छा बनने को नहीं कहा, उन्होंने एक ठोस मैकेनिज्म बनाया। यानी उन्होंने काम करने का ढंग ही बदल दिया। बिल्कुल। ASI ने अपने मैनेजर्स की ट्रेनिंग का तरीका बदला। उन्होंने रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस शुरू की, जहां मैनेजर्स को एंग्री कंज्यूमर एडवोकेट्स या पर्यावरण कार्यकर्ताओं की जगह बैठकर सोचना पड़ता था। उनके इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स को बदला गया। तो उन्होंने एक दूसरे नजरिए से देखना सिखाया। हाँ, उन्होंने सिखाया कि अगर किसी कंज्यूमर एडवोकेट ग्रुप को परेशानी है तो उसे विरोधी दुश्मन ना मानकर एक ऐसे फ्री R&D डिपार्टमेंट की तरह देखो जो आपको आपके प्रोडक्ट की कमियां बता रहा है। यानी उन्होंने समस्या को देखने का लेंस ही बदल दिया। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन इसमें खतरे भी तो बहुत होंगे ना। जब कोई संस्था इतने अलग अलग लोगों को सुनने लगती है तो क्या ये जोखिम नहीं होता कि वो फंस जाए और फैसला ही ना ले पाए? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यहीं पर दो सबसे बड़े पिटफॉल्स यानी खतरों की बात आती है जिनसे संस्थाओं को हर हाल में बचना चाहिए। पहला है एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट स्टेक होल्डर्स के डेटा और मैप बनाने में इतना खो जाता है कि वो पूरा वक्त सिर्फ विश्लेषण करने में बिता देता है। वो हर मीटिंग में नए चार्ट लाते हैं, पर जमीन पर कोई ठोस एक्शन नहीं लेते। तो वो बस डेटा में उलझ कर रह जाते हैं। और दूसरा खतरा कौन सा है? दूसरा, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो है स्नेल डार्टर फैलेसी। स्नेल डार्टर फैलेसी, इसका नाम तो किसी छोटी मछली जैसा लग रहा है। इसका बिजनेस की दुनिया में आखिर क्या कनेक्शन है? नाम से आपने ठीक अंदाजा लगाया। स्नेल डार्टर दरअसल एक बहुत छोटी सी मछली की प्रजाति है जिसके बचाव के कानून का सहारा लेकर एनवायरमेंटलिस्ट्स ने एक अरबों डॉलर के विशाल डैम प्रोजेक्ट को रोक दिया था। अरे वाह, एक छोटी सी मछली ने इतना बड़ा डैम प्रोजेक्ट रोक दिया? हाँ, और बिजनेस स्ट्रैटेजी में इस फैलेसी का मतलब होता है किसी ऐसे स्टेक होल्डर को छोटा और कमजोर समझने की भूल करना जो भीड़ में सबसे शांत दिख रहा हो। मतलब जिसको हम गैर जरूरी समझते हैं। बिल्कुल। कई बार जो स्टेक होल्डर सबसे असहाय लगता है वो आगे चलकर किसी कानूनी दाव पेच या सोशल मूवमेंट के सहारे सबसे बड़ा और विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। कभी किसी छोटे सप्लायर या स्थानीय समुदाय को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमें बाहरी दुनिया की हर आवाज को बराबर ध्यान से सुनना होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है जो पुस्तक के तीसरे हिस्से से जुड़ा है। हाँ, चैप्टर 7 से, जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जिक्र है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल वही सवाल। अगर मैं किसी कंपनी की CEO हूँ और बाहरी दुनिया, सोसाइटी, पर्यावरण, इन सब का ध्यान रखकर फैसले लेने लगती हूँ, तो मेरे अंदर की दुनिया यानी मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुझे अगले ही दिन निकाल बाहर करेगा। क्योंकि बोर्ड को तो आखिरकार हर क्वार्टर में बढ़ता हुआ प्रॉफिट चाहिए। वही तो इंटरनल स्ट्रक्चर को बदले बिना ये एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी कैसे काम कर सकती है? यही तो इस थ्योरी की सबसे बड़ी जीत है। ये इस बात पर पूरा जोर डालती है कि संस्था का इंटरनल स्ट्रक्चर, खासकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी सोच को बदलना जरूरी है। पहले बोर्ड का बस एक मंत्र होता था कि स्टॉक होल्डर्स का मुनाफा मैक्सिमाइज करना है। लेकिन अब तो स्थिति बदल चुकी है। हाँ, अब ऐसी टकराव की स्थितियां पैदा होती हैं जहां बोर्ड को समझना पड़ता है कि अगर उन्होंने व्यापक सामाजिक जरूरतों को नजरअंदाज करके सिर्फ मुनाफा कमाया तो अगले कुछ सालों में कंपनी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो उन्हें मुनाफा और सामाजिक स्वीकृति दोनों का संतुलन बनाना होगा। सही कहा। बिना इस इंटरनल शिफ्ट के कोई भी कंपनी लंबा सफर नहीं तय कर सकती। बोर्ड के सदस्यों को अब समाज के बारे में सोचना ही पड़ेगा। और इस शिफ्ट का असर सिर्फ ऊपर बोर्ड रूम तक ही सीमित नहीं रहता ना। अगर हम फंक्शनल डिसिप्लिन्स यानी कंपनी के अलग अलग विभागों को देखें जो चैप्टर 8 में बताया गया है, तो वहां भी भूचाल आ जाता है। हाँ, वहां तो पूरा ढंग ही बदल जाता है काम करने का। मसलन PR यानी पब्लिक रिलेशंस और मार्केटिंग को ही ले लीजिए। एक जमाने में PR का काम क्या होता था? किसी बुरी खबर के आने पर एक अच्छी सी प्रेस रिलीज लिखना और डैमेज कंट्रोल करना, यानी कंपनी की एक चमकदार इमेज पेश करना। बिल्कुल। PR का काम सिर्फ स्पिन डॉक्टरिंग तक सीमित था। लेकिन अगर हम स्टेक होल्डर दृष्टिकोण से देखें तो इन विभागों को अपनी पहचान पूरी तरह बदलनी पड़ेगी। इन्हें अब सच में स्टेक होल्डर्स के साथ जुड़ना होगा
और पुल बनाने का काम करना होगा। और इसी वजह से अंदर के हर मैनेजर का रोल पूरी तरह बदल जाता है। किसी भी विभाग के मैनेजर का अपना एक इंटरनल स्टेक होल्डर जरूर होता है। जैसे R&D डिपार्टमेंट के लिए मार्केटिंग टीम एक स्टेक होल्डर है, या HR के लिए बाकी सारे डिपार्टमेंट्स। तो जब तक ये अंदर के स्टेक होल्डर्स आपस में सार्थक ढंग से नहीं जुड़ते, तब तक बाहरी दुनिया के सामने कोई मजबूत रणनीति नहीं बन सकती। और इस इंटरनल और एक्सटर्नल दुनिया को जोड़ने का जो सबसे बड़ा जिम्मा आता है, वो आता है संस्था के नेता पर, उसके एग्जीक्यूटिव पर, जिसे चैप्टर 9 में समझाया गया है। तो यहाँ आकर एक एग्जीक्यूटिव, एक CEO की भूमिका पूरी तरह पलट जाती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? एक CEO का अकेले कोने वाले कमरे में बैठकर आदेश देना, या सिर्फ एक्सेल शीट्स पर ध्यान देना, अब बिल्कुल बीते कल की बात हो गई। सही मायनों में अब एक नेता को बैलेंसर यानी संतुलन बनाने वाला और एक नेगोशिएटर बनना पड़ता है। यानी उसका काम अब सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाना नहीं रहा। प्रॉफिट तो इस मैनेजमेंट का बस एक नतीजा बनकर रह गया है। बिल्कुल, उसे एक ऐसी अहम खड़ी बनना पड़ता है जो नाराज एनवायरमेंटलिस्ट, सख्त कानून बनाने वालों, हक मांगने वाले कर्मचारियों और मुनाफा चाहने वाले शेयरधारकों के बीच एक सहमति निकाल सके। एक आम रास्ता निकालना पड़ता है सबको साथ लेकर। हाँ, नेता को लगातार लोगों की आशाओं, उनकी अशांतियों और उनके डर के बीच संतुलन बनाना होता है। इसके लिए सबसे जरूरी कुशलता है दूसरों को सुनने और उनके दृष्टिकोण से दुनिया को देखने की क्षमता। अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक सूत्र में पिरोना चाहें, तो ये पुस्तक एक आम एकेडमिक रिसर्च को उठाकर एक ऐसी सच्चाई के सामने खड़ा कर देती है जहां व्यापार अकेले दौड़ने की रेस नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े हुए नेटवर्क को साथ लेकर चलने की एक कला है। सही बात है, ये सिर्फ एक थियरी नहीं, जीने का तरीका है बिजनेस के लिए। चर्चा को समेटते हुए एक नया और बहुत गहरा विचार सभी श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगी, जिसके बारे में वो अकेले में विचार कर सकें। सोचिए, अगर हम इस दुनिया की हर संस्था, हर बड़ी कंपनी और हर सरकारी विभाग को एक अलग अकेली शक्ति मानना पूरी तरह बंद कर दें, तो फंस जाएंगे हम एक नए नजरिए में। और उसकी जगह इस पूरे आर्थिक सिस्टम को एक आपस में गुंदे हुए विशाल स्टेक होल्डर नेटवर्क के रूप में देखें, जहां एक कोने में मची हलचल दूसरे कोने तक महसूस होती है, तो हमारा ढांचा कैसे बदलेगा? ये एक ऐसी कल्पना है जो व्यापार के नियम ही नहीं बदलेगी, बल्कि हमारे देखने के नजरिए को ही उलट देगी। अगर हम इस इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे पर निर्भरता को अपनी आर्थिक और सामाजिक सोच का केंद्र बना लें, तो हमारा पूरा ढांचा नए सिरे से घड़ने लगेगा। इससे हर फैसला सिर्फ निजी मुनाफे को देखकर नहीं, बल्कि उसके व्यापक असरों को समेट कर लिया जाएगा। बिल्कुल। और क्या इस एहसास से हमारी खुद की जिंदगी जीने के तरीके में एक नैतिक क्रांति, एक एथिकल रिवॉल्यूशन जैसी स्थिति पैदा नहीं हो जाएगी, जिसमें हम अपने हर छोटे बड़े फैसले को लेने से पहले ये देखें कि इसका असर हमसे जुड़े किन किन लोगों पर पड़ रहा है? ये सोच ही अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है। इन्हीं गहरे और दिमाग को उलझाने और सुलझाने वाले विचारों के साथ सभी को एक बार फिर आत्मीय रूप से याद दिलाना है कि शो नोट्स में दिए गए कैम्ब्रिज एडिशन के लिंक को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए ज़रूर चेक करें। साथ ही नए और पुराने रिसर्चर्स, AOM SIM-Bytes और स्पेस इकोनॉमी PDW के लिंक्स पर भी अपनी नज़र ज़रूर डालें। एक शोधकर्ता के इस लंबे और कभी न ख़त्म होने वाले सफ़र में ऐसी किताबें और ऐसे इनिशिएटिव्स उन पथ प्रदर्शकों की तरह काम करते हैं जो दुनिया को एक बिल्कुल नए और रोशनी से भरे नज़रिए से देखना सिखाते हैं। Forestil dig Bob Collingwood. Altså, Bob er en mand, der på papiret simpelthen har vundet i livet. Ja, udadtil ser alt jo helt perfekt ud. Nemlig. Han er administrerende direktør for den amerikanske afdeling af Woodland International. En gigantisk multinational virksomhed med 10.000 vis af ansatte. Men hvis du træder ind på hans hjørnekontor lige nu og kigger over skulderen på ham, mens han stirrer på sin kalender for de næste 2 uger, så vil du se en mand, der sveder koldt. Ja, det er en famøse lederkalender. Den kan være brutal. Det er simpelthen et absolut mareridt af krydsende og modstridende interesser. Prøv lige at høre her. På mandag er han indkaldt til statslige høringer om potentielle udflytninger af fabrikker, hvor politikere står i kø for at grille ham levende. Og det er kun mandag. Præcis.
Torsdag skal hans team lancere et helt nyt og ekstremt afgørende testprodukt. Lørdag skal han mødes med vrede forbrugergrupper, der stiller meget nærgående og ret ubehagelige spørgsmål til netop dette produkts sikkerhed. En lørdag endda. Ja, og søndag. Der er der planlagt massive miljødemonstrationer foran en af hans ældste fabrikker i protest mod luftforurening. Og oven i alt det her, som en mørk skygge over skriveordet, ligger der en dufrisk kvartalsrapport. Lad mig gætte. Den er ikke god. Den viser, at virksomhedens profit lige er dallet med 20%. Wow. Ja, okay. Det er voldsomt. Helt vildt. Bob er faret vild. Han sidder fast i en endeløs, opslidende cyklus af kriser, der bare afløser hinanden. Og det gør han simpelthen, fordi han mangler et strategisk rammeværk til at håndtere en omverden, der er blevet alt for kompleks i forhold til de ledelsesmodeller, han i sin tid lærte på handelsskolen. Altså, det er en utrolig genkendelig og, vil jeg sige, meget menneskelig situation. Bob er jo ikke en inkompetent leder. Han er bare fanget i en systemfejl. Og det er præcis den form for lammende kompleksitet, der tvinger os til at gentænke helt fra bunden, hvordan vi overhovedet forstår en virksomhed i et moderne samfund. Ja, og i dag vil vi prøve at redde Bobs karriere, kan man sige. Og endnu vigtigere vil vi give dig, der lytter med, de værktøjer, du skal bruge næste gang din egen kalender brænder fuldstændig sammen i din forskning eller din ledelse. Lige præcis. Og løsningen på hele den her knude findes i et absolut hovedværk, som vi har foran os i dag. Ja, vi taler selvfølgelig om bogen Strategic Management, A Stakeholder Approach, skrevet af R. Edward Freeman. Den blev oprindeligt udgivet helt tilbage i 1984 som en del af Pittman-serien inden for Business and Public Policy. Og den står i dag som et regulært vendepunkt. Det er altså teksten, der mere eller mindre grundlagde vores moderne forståelse af forretningsetik og det begreb, vi kender som interessent teori. Men for virkelig at forstå vægten og dybden af det her værk, så er vi nok nødt til at se lidt på manden bag ordene. Hvem er professor Freeman egentlig? Jamen, han anerkendes i dag bredt som selveste faderen til stakeholder theory og stakeholder capitalism. Men det interessante er, at Freeman faktisk slet ikke er en traditionel forretningsmand, der er flasket op i et jakkesæt med et regneark i hånden. Nej, han har en lidt anden vinkel, ikke? Helt sikkert. Han blev født i Columbus, Georgia, tilbage den 18. december 1951. Og hans akademiske rødder stikker i en helt anden retning. Han modtog sin bachelor i matematik og filosofi fra Duke University i 1973. Matematik og filosofi, det er en ret usædvanlig kombination for en ledelsesguru. Nemlig. Og derefter tog han en Ph.D. i filosofi fra Washington University i St. Louis i 1978. Og netop den her dobbelte linse, altså den matematiske sans for komplekse systemer og den filosofiske sans for etik, den gennemsyrer hele hans teori. Og han har undervist nogle ret tunge steder sidenhen. Altså University of Minnesota og Wharton School, for bare at nævne et par stykker. Ja, og i dag har han Elise Ansigne Olsen, Professor of Business Administration ved Dartmouth School of Business på University of Virginia. Hans indflydelse på, hvordan vi tænker kapitalisme, er enorm. Han modtog et Pioneer Award for Lifetime Achievement i 2001 fra både World Resources Institute og Aspen Institute, og i 2005 fik han Outstanding Faculty Award af Virginia State Council on Higher Education. Ja, det er et ret imponerende CV. Og hans verdenssyn har simpelthen for altid forbundet forretning af kapitalisme og etik. For Freeman er forretningen jo ikke bare en lineær maskine, hvor du hælder råvarer ind i den ene ende, og så sprøjter der profit ud til aktionærerne i den anden. Nej, forretning er et levende system, hvor vi skaber værdi for interessenter. Og det er et helt andet prisme at se verden igennem. Ja, og værkets arv er faktisk så massiv, at Cambridge University Press i anledning af bogens 25-års jubilæum valgte at udgive en ny print-on-demand-udgave for at gøre den tilgængelig for en helt ny generation. Som man i øvrigt kan finde et link til i vores show notes. Lige præcis. Så formatet i dag er, at vi vil guide dig, uanset om du er erfaren leder, eller du står på tærsklen til din allerførste akademiske forskningsrejse, roligt gennem bogens logiske struktur og dens mest afgørende indsigter. Og det er en vigtig rejse, for Freemans arbejde udfordrer den mest grundlæggende antagelse, vi har, når vi tænker på kapitalisme. Han beder os faktisk om at kaste det gamle kort over verden helt væk. Okay, lad os lige folde den ud.
For at forstå, hvorfor Freemans teori var så revolutionerende, er vi nødt til at starte med at kigge på det forældede verdensbillede, som Bob Collingwood og mange andre stadig forsøger at navigere efter. Freeman bruger en fantastisk analogi i bogen om et arkivskab. Ja, den er så sigende. Forestil dig, at du har et fysisk, tungt stålarkivskab stående til dit kontor. Du har pæne, navngivende mapper i skufferne. Der er en mappe til kunder, en til ejere, en til leverandører og en til medarbejdere. Og det er så hele dit system. Som jo fungerer perfekt i en simpel og rolig verden. Ja, præcis. Men pludselig begynder virkeligheden uden for vinduet at forandre sig hastigt. Der kommer nye regeringsindgreb, miljøaktivister demonstrerer, globale konkurrenter dumper priserne. Og fordi du ikke har specifikke mapper til de her ting i dit ledelsessystem, så begynder du febrilsk at stoppe alle de her sager ned i den lille bitte mappe bagerst i skuffen. Den, der bare hedder diverse. Nemlig diverse mappen. Du klemmer papirerne ned, og til sidst flyder den fuldstændig over, skuffen binder, og hele systemet bryder simpelthen sammen, fordi dit mentale arkivskab ikke længere passer til den komplekse virkelighed. Det er så fascinerende, for den virkelige historie demonstrerer præcis det her mentale sammenbrud. Bogen fremhæver et utroligt illustrativt eksempel med Ralph Nader tilbage i 1959. Ah ja, Campaign GM. Lige præcis. Den unge advokat Ralph Nader annoncerer Campaign GM rettet mod General Motors, som på det tidspunkt var en af verdens mægtigste virksomheder. Nader gik ud og købte 2 aktier i General Motors. Vent lige, 2 aktier? Ja, bare 2 aktier ud af millioner. Men hans mål var jo ikke et økonomisk afkast. Han ville bruge den stemmeret, de 2 aktier gav ham, til at gennemtvinge en offentlig debat om bilsikkerhed, forurening og minoriteters rettigheder direkte på selskabets generalforsamling. Men det lyder jo som en myg, der forsøger at vælte en elefant. Hvordan kunne en mand med 2 aktier overhovedet blive et problem for et gigantisk firma som General Motors? Fordi deres gamle arkivskab fuldstændig kognitivt lamslog ledelsen. De havde absolut ingen kategori for en mand som Nader. Han var ikke en traditionel konkurrent, og med kun 2 aktier var han knap nok en traditionel ejer. Han passede ikke ind i nogen mapper. Lige præcis. Alligevel formåede han at hacke systemet, og pludselig var den her lille ydre begivenhed et massivt internt ledelsesproblem. General Motors brugte enorme ressourcer på at bekæmpe ham, simpelthen fordi deres strategiske rammeværk kortsluttede. Og uden overhovedet at tage stilling til Naders politiske dagsorden her, så er det rent strategisk et mesterligt skoleeksempel på, at virksomheder ikke længere eksisterede i et lukket kredsløb. Og det er jo lige præcis der, i ruinerne af det sammenbrudte arkivskab, at Freemans løsning tager form. Selve ordet stakeholder, eller interessent, som vi kalder det på dansk, det er jo faktisk slet ikke Freemans egen opfindelse, vel? Nej, det dukkede første gang op i et internt notat hos Stanford Research Institute helt tilbage i 1963. Det blev defineret som de grupper, hvis støtte er absolut nødvendig for, at organisationen overhovedet kan overleve. Og det Freeman gør, er at tage det her spæde begreb og bygge et fuldt, tredimensionelt, strategisk rammeværk op omkring det. For at undgå Bobs mejeriet skal man operere på 3 niveauer. Det første er det rationelle niveau. Det er der, hvor man tegner sit interessentkort. Hvem er de, og hvad er deres dagsorden? Jamen, Freeman understreger meget stærkt, at et kort kun er et stykke papir. Det redder ingenting at have det liggende i en skuffe. Så det andet niveau er det processuelle niveau. Hvordan integrerer man det kort i hverdagen? Tager HR og kvalitetskontrol rent faktisk højde for de her interessenter i deres faste procedurer? Er der budgetteret med dem, simpelthen? Præcis. Og det tredje og mest dynamiske niveau er det transaktionelle niveau. Det er selve interaktionen. Det er de svære forhandlinger og byttehandler, som organisationen foretager med omverdenen hver eneste dag. Så det er en kæde, der ikke er stærkere end det svageste led. Du kan have et nok så flot interessentkort, men hvis dine sælgere taler ned til kunderne i praksis, så fejler du fuldstændigt på det transaktionelle niveau. De 3 niveauer skal være i perfekt synk. Lige nøjagtigt. Men når man først begynder at tegne det kort, så opstår der en ny krise. For når verden pludselig er fyldt med dusinvis af interessenter, der trækker et af aktionærer, der vil have udbytte, aktivister, der vil have grøn produktion, hvordan pokker sætter man så en strategisk retning? Hvordan finder virksomheden ud af, hvad den overhovedet vil? Det leder os ind i begrebet Enterprise Strategy. Og lad mig lige stoppe op her en gang. For da jeg læste det her, tænkte jeg, at før Freeman, der var mantraet jo mere eller mindre Milton Friedmans ord om, that the business of business is business. At målet kun er profit. Ja, maksimering af profit inden for lovens rammer.
Nemlig. Men Freeman beder ledelsen besvare et dybt eksistentielt spørgsmål. Hvad står vi for? Det er et radikalt skift at starte med et moralsk kompas i stedet for et budget. Og det er der, den filosofiske del af Freemans baggrund slår igennem. For at formulere en sandt enterprise strategy skal du analysere krydsfeltet af 3 ting. For det første, interessenternes krav. For det andet, ledelsens personlige værdier. Freeman afviser fuldstændig myten om, at ledere bare er rationelle, kolde maskiner uden etik. Ja, de er jo mennesker. De er mennesker. Og for det tredje, de bredere samfundsmæssige udfordringer. Først når du finder overlappet mellem interessenternes krav, dine egne værdier og samfundets behov, finder du din sande retning. Og her bliver det for alvor interessant. For en ting er at sidde trygt i et lunt mødelokale og tegne de her fine cirkler. Men hvordan går man fra kortlægning til brutal handling ude i virkeligheden? Hvordan implementerer man strategier for, lad os sige, miljøaktivisterne uden for Bobs fabrik, som jo i princippet bare vil lukke ham ned? Det er den sværeste overgang. Freeman forklarer det via noget, han kalder The Stakeholder Dilemma, hvor han trækker på spilleteori. Det handler fundamentalt om frivillighed, altså voluntarisme. Ofte ser vi en konflikt som et nulsumsspil. Hvis aktivisterne vinder, taber vi. Så reaktionen er at bygge mure og trække tiden. Og vente på domstolen, men spilleteorien siger vel, at det er den dummeste strategi at barrikadere sig? Helt bestemt. Reaktiv adfærd fører oftest til det ringeste udfald for begge parter. Lovgivning er et utroligt sløvt og brutalt instrument. Hvis staten regulerer dig, bliver det ufleksibelt. Men hvis du proaktivt og frivilligt inviterer kritikerne til forhandlingsbordet, ændrer du spillet til at handle om en fælles kooperativ løsning. Bogen har jo det der fantastiske eksempel med AT&T, teleselskabet, længe før de blev brudt op. De fik voldsom kritik fra forbrugergrupper over deres uigennemskuelige priser. I stedet for at sende advokater efter dem, gjorde de noget uventet. De inviterede simpelthen de mest højtråbende forbrugerledere ind for direkte at designe nye prismodeller. Ja, de tog dem ind i maskinrummet. Nemlig. Og ved at gøre det frivilligt, decimerede de konflikten og omdannede en fjende til en slags ubetalt konsulent. Det er mekanismen bag frivillighed. Det er ikke naiv godhed. Det er bare intelligent strategi. Du bevarer kontrollen. Jamen, jeg forstår logikken, men lad mig alligevel lige udfordre den. Bob Collingwood er direktør for en milliardvirksomhed. Kan han ikke bare sige, ved I hvad, vi gider simpelthen ikke bruge tid på 5 studerende med et papskilt eller den lokale fugleforening. Vi fokuserer på regeringen og storbankerne. Hvorfor overhovedet lytte til myggene? Det er et virkelig vigtigt spørgsmål, for det er en fælde, mange ledere falder i. I bogen defineres det som fænomenet The Snail Daughter Fallacy, altså snail daughter fejlslutning. Snail daughter? Det lyder som et eller andet fra et naturprogram på tv. Det er det sådan set også. En snail daughter er en udryddelsestruet, meget lille amerikansk fiskeart på størrelse med en fænder, men i 70'erne formåede opdagelsen af den her lille bitte fisk i Tennessee at fastfryse et massivt statsligt infrastrukturprojekt til $100 millioner. Wow! Via The Endangered Species Act stoppede den simpelthen konstruktionen af Tellico-dæmningen. Fejlen ledere begår er at tro, at en gruppes magt er proportionalt med dens økonomiske størrelse. Det er den bare ikke. I et moderne landskab med medier og jura kan en mikroskopisk gruppe udgøre en eksistentiel trussel. Det er en utrolig stærk lærestreg. Den lille fisk, der stopper kæmpedæmningen. Og for dig, der lytter med, er det en afgørende indsigt, uanset om du er i en virksomhed eller i akademisk forskning. Kompleksiteten i at kortlægge interessenter kan være voldsom at navigere i for tidlige forskere. Og det leder mig faktisk til en ret spændende nyhed. Ja, det er et rigtig godt initiativ. Nemlig Academy of Managements SIM Division, altså Social Issues in Management, har i stilhed startet et helt nyt månedligt initiativ her i juni 2026. Det hedder AOM SIM-Bytes. Det er korte, real-style videoer, produceret af seniorforskere, rettet direkte mod tidlige forskere og Ph.D.-studerende. Og der er jo en helt fantastisk detalje her. Hvis du vil høre mere om de her koncepter, så er den allerførste YouTube-short i denne serie faktisk lavet af ingen ringere end professor Ed Freeman selv. Præcis. Faderen til Stakeholder Capitalism. Initiativet drives af SIM Curriculum Development Committee, og vi er ret stolte over at kunne nævne, at vores egen producent, Mayukh,
Mukhopadhyay, faktisk er medlem af komiteen og har arbejdet frivilligt i et år med at planlægge indhold og redigere videoerne. Det er et kæmpe stykke arbejde, og det var oprindeligt professor Sheldon Simola fra Trent University i Ontario, der fik ideen. Nu drives det så fremad af komitéformand professor Jennifer Griffin fra Loyola University i Chicago. Man kan finde et link til AOM SIM-Bytes i vores show notes, men der er faktisk mere, ikke? Jo, mens vi er ved muligheder for faglige kvantespring. Hvis du planlægger at deltage fysisk i Academy of Managements 96. årlige møde i Philadelphia i USA, så vil du registrere dig til den Professional Development Workshop, eller PDV, der handler om Space Economy. Det lyder næsten som science fiction. Jamen, det er højaktuelt. Den ledes af Dr. Mechi Muntakabi fra Syed Business School på Oxford University, og vores producer Mayukh Mukhopadhyay er faktisk også bidragyder til denne tværfaglige og meget entrepreneurielle workshop. Linket er også i show notes. Tænk, at vi nu skal lave interessant kortlægning for det ydre rum. Men lad os lige trække os ned på jorden igen til Bobs kontor. Vi har kortlagt, vi kender værdierne, og vi ved, at vi skal forhandle frivilligt. Men hvordan påvirker det selve strukturen i en virksomhed? Bob kan jo ikke tænke på alt det her alene. Nej, for så brænder han sammen. Den sidste del af Freemans teori udfordrer selve den måde, vi bygger vores organisationer på. Det starter i bestyrelsen. Ejerskab er komplekst. Tænk bare på nader. Bestyrelsen går fra kun at være dørvogtere for kapitalen, til at være balancemejer, der skal afveje samfundets interesser for overhovedet at sikre overlevelse på lang sigt. Og det spreder sig vel ned gennem hierarkier? Helt sikkert. Tag PR-afdelingen som eksempel. Før i tiden var det bare talerør, der lavede skadeskontrol, når direktøren havde trådt i spinaten, eller udsendte polerede pressemeddelelser. I Freemans model bliver PR i stedet til External Affairs. Deres nye opgave er boundary spanning. At bygge bro over grænsen. Præcis. Man skal ikke kun pumpe information ud. Ufiltreret information skal også flyde ind. Man skal afkode kriser, før de opstår, og forhandle i frisk tid. Altså, lad mig prøve at visualisere det her boundary spanning. I det gamle system var virksomheden nærmest som en tyk middelalderborg med en vindebro. PR-afdelingen stod på muren og holdt folk ude. Freemans model forvandler i stedet virksomhedens grænse til en slags koralrev. Havvandet, samfundets bekymringer og idéer flyder konstant ind og ud gennem revet og nærer økosystemet. External Affairs er dem, der aflæser vandets strømme. Det er jo en utrolig smuk måde at se det på. En virksomhed er netop et økosystem. Og det leder os helt naturligt frem til direktørens rolle. Så hvad betyder det for Bob Collingwood, når han nu kigger på sin kalender? Det betyder et enormt ansvar, men også en stor lettelse. Bob skal stoppe med at være en maskine for kortsigtet profit. Han er nu en orkestrator, en balance af relationer. Freeman siger faktisk, at en direktør er en form for public servant, en offentlig tjener. Fordi eksistensberettigelsen hviler på samfundets accept. Lige præcis. Vinder samfundet som mod dig, dør virksomheden, uanset hvor godt dit produkt er. Og lad os lige trække den indsigt ned i øjenhøjde til dig, der lytter. Uanset hvor du er, om du er Ph.D.-studerende eller leder, så er du en grænsegænger. Din valg påvirker et helt økosystem af interessenter. Du opererer aldrig i et vakuum. Det er den største erkendelse her. Vi er en del af et indbyrdes forbundet netværk. Det kræver mod at indse den kompleksitet, men det er også her, vi finder evnen til at skabe langsigtet værdi. Så jeg vil gerne bede dig om noget i dag. Uanset om du abonnerer på kanalen eller ej, så gør dig selv den tjeneste at finde tid til at læse denne mesterligt udformede lærebog i dens fulde længde. Linket til Cambridge-udgaven er i show notes. Bogen introducerer også nogle fantastiske koncepter lånt fra økonomen Albert Hirschman. Han taler om 2 reaktioner på et skuffende system, exit og voice. Altså om man forlader systemet eller bruger sin stemme. Og netop det leder os frem til vores afsluttende spørgsmål til dig. Tænk på Bobs kalendermareridt, hvor han var ved at give op. Interessant teorien lader ham se klart at finde en vej frem gennem samarbejde. Så når du som interessant møder et system, et produkt eller et forskningsmiljø, som du er utilfreds med, vælger du så bare den nemme udvej og forsvinder, altså vælger du exit, eller tør du blive stående, sænke vindebroen og bruge din stemme, din voice til at forme og forbedre systemet indenfra? Hvilken form for interessant vil du være i din egen karriere?